peeing is so fun. Peeing and taking a nice dump are two of the most underrated feelings, bro. Like मैंने बिली आइलिश की वीडियो देखी थी. It's my favorite activity. अच्छा मैंने तो अंडरवियर पहनना ही शुरू किया था जब मेरी स्कूल में पैंट फट गई थी सारी bro. फ्रंट से पीछे like the entire thing bro. मुझे उस दिन लेने भी मेरे अंकल मुझे मोटरसाइकिल पे आए थे. तुम लोगों की जिंदगी में कितने टीचर्स थे थ्रू आउट स्कूल एंड यूनी टाइप जो तुम लोगों को एक्चुअली पसंद है? मुझे जो मेरा फेवरेट टीचर था, his name was Sir Sam. Zedality. तो हम डिस्कस कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स कि दानियाल की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, तू बता. यार एक है करंट नहीं, लाइक राइट नाउ अभी नहीं अभी तो ब्रो मैं सिंगल हूँ, you know I'm just trying to lay low and miss you baby. यार नहीं ब्रो अभी टाइम नहीं है यार, ये प्यार श्यार वाला जो पूरा सीन है ना इसने मुझे बहुत एग्जॉस्ट कर दिया है. So you're trying to lay low but not get laid basically. Yeah. No, I'm trying to get laid while laying low. Yeah. Oh. I thought you were gonna give an explanation. No, because you're the you know the typical white fair-skinned guy with the green eyes, the conventionally good-looking guy now into TV dramas, falls into the now into TV dramas, extremely famous, rich, but not to forget the main reason why he is a boy is because he has a privilege to be my friend. जो बात है, that's actually यही मैं कहने लगा था. ये भी मेरी जिंदगी में क्या हुआ वैसे एक्चुअली सही यार. वैसे क्या तूने क्या भंड मारा, तू जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर. मैंने भंड नहीं मारा यार. लोग बेसिकली बस एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपको जो रोल्स मिलते हैं वो किस वजह से मिलते हैं, इसलिए कि आप दानियाल जफर के दोस्त हैं तो या इसलिए कि बस आप बहुत टैलेंटेड हैं. उन्होंने पूछा था सवाल में, ये सवाल था तो मैंने वो फिर उन्होंने लगाया नहीं ना बाद में. एग्जैक्टली मैंने जवाब देते हुए बोला कि नो आई एम एक्चुअली अ वेरी लकी पर्सन एंड दिस इज मी चेकिंग माई प्रिविलेज. मैं बस बेसिकली बता रहा हूँ कि यस मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग आउट देयर हैं, बट बिकॉज मैं आपकी सोसाइटी का जो एक सेट स्टैंडर्ड है गुड लुकिंग होने का वो मैं फुलफिल करता हूँ, क्योंकि लोग यही कहते हैं ना गोरा रंग, लंबा कद और मतलब इस तरह के फीचर्स, ग्रीन आंखें. ये नहीं मैं कह रहा था कि वो मेरी हैं और मैं कोई स्पेशल आदमी हूँ. मैं बस कह रहा था कि यार I was lucky to get these things and then I was lucky to become friends with people from the industry like Danny Z and then get the auditions that got me the parts. ये मैं कह रहा था यार. और बस इसमें मैं I don't think I was bragging. If I had to brag, I'd say कि like मतलब दानियाल का मैं दोस्त मुझे किस्मत से तो नहीं बना, मैं डिजर्व करता हूँ अपने सारे पार्ट्स और मैं बहुत मेगा टैलेंटेड आदमी हूँ और मेरे से गुड लुकिंग इंसान दुनिया में नहीं. ये पैराडॉक्सिकल भी है क्योंकि अगर तू ब्रैग कर रहा होता तो तू ये नहीं कहता कि मैं किसी का दोस्त हूँ तो इसलिए मुझे मेरी किस्मत अच्छी है. अगर मैं ब्रैग कर रहा होता तो मैं एक्चुअली किसी को एक्नॉलेज ना करता मेरी जिंदगी में जिन लोगों की वजह से मुझे हेल्प भी हुई काफी पॉइंट्स. It was actually anti-brag. जिस तरह you like I think becoming friends with you also gave me a lot of exposure to content and a lot of exposure to different audiences that I did not have exposure to. And if I sit somewhere and say I'm friends with Shabir Jafri and I'm lucky to be friends with this guy, then that's not me bragging, that's actually me checking the privileges I got in my life, you know. Yeah, well said. Well said. Yeah. हाँ, वो obviously people, you know. But हाँ, इससे पहले जो हम कर रहे थे वो sarcasm था भाई. मैं नहीं हूँ वो सब चीजें. The weirdest thing is that this is actually true. Since I think puberty hit me in school. When? We 14, 13, 14, whenever it does, 12. I don't know. But जब मैं थोड़ा सा weight supposed to be a joke. This guy is like, yeah, 13, 14, whenever in the school. अच्छा जो अभी यार. हाँ जो भी. लेकिन my point being that when I lost a considerable amount of weight and when जब शक्ल वक्ल बनना शुरू होगी सब कुछ हो गया, everyone deemed me as the drug addict, drinking, going crazy, party boy, play boy और ये तो ये वो सारा है. मेरी भाभियाँ मजाक उड़ाती रहती हैं कि दुनिया को लगता है कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन the world doesn't know, bro. I get played, bro. I'm the one who gets played. Yeah. And so he's also one of the most cleanest people I know.
not in terms of like कि नहाता धोता वो गंदा है. वो तो हाँ. Cleanest in the sense के I have never seen this guy smoke a cigarette even. Cigarette भी नहीं Yeah, I पीता. hate cigarettes. I even मैं भी नहीं like पीता मगर मैंने जिंदगी में पिया हुआ सिगरेट. मैं भी हाँ. नहीं पीता क्योंकि मैंने छोड़ दी बहुत पहले क्योंकि गलत चीज है. वेप भी मैं करता था जिंदगी में एक पॉइंट पे, वो भी मैंने छोड़ दिया कि गलत चीज है. बट इससे तो मैंने कभी ये चीजें करते नहीं देखा. मैंने इससे Bro, लास्ट I- वीक ये बात की थी कि आई हैव नेवर सीन यू स्मोक एनीथिंग व्हिच इज सो रेयर नाउ क्योंकि एवरीवन स्मोक्स at some point Yeah. somewhere. Do you guys think vape is as bad as cigarette or worse? Because a I lot of think people vape it's के say बारे bad, में bro. हमारे पास अभी any smoke information ही going नहीं है. inside you, hands down, Yeah. is just bad. There's no Yeah. smoke going inside you that's gonna Yeah. be good. यार मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना वेप करना छोड़ा और वेप छोड़ने के बाद 1 महीने बाद खांस के काफी ज्यादा रेशा मैंने बाहर निकाला और उसके बाद बस मैंने रियलाइज किया कि मेरे एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हैं, मैं बेहतर फील करता हूँ, मुझे सांस नहीं इतना चढ़ता, तो काफी फर्क पड़ता है वेप Oh, से भी. bro, 100%. I think it's very much the fact that it's become a habitual thing as well. कुछ लोग हैं जो बस वो like they होता ना fidget करते थे पहले. You need something to fidget with. Now like vaping is just that, bro. You need something. You Yeah, need in your mouth. something. Yeah. चोर फाड़ लो हाथ से. It's so available. Like, Put something else. मसला ही है. क्या कहा इसने? You gotta put something else in your mouth. Because people, yeah, Right. actually, the thing is, I personally feel that, Zainab, my friend's outside. Can you get him? yeah, like honestly, cheese batana, like I'm thinking of this for a very long time. Don't you think on the road, like the traffic is just too much now? oh, bro, it's All of a insane, sudden? bro. Only in phase 6, it takes like 15 minutes to get out of phase 6. Bro. Yeah, and I remember back when I came here, Yeah. 2011 में A level करने, empty होता था. Empty, bro. खाली था. Yeah, लाहौर it was में बड़ा empty. कम rush Yeah, होता था. yeah. और लोग जो 90s के बताते हैं कि बिल्कुल खाली सड़कें होती थी. And now it's too much. Like I came back from Karachi yesterday. Karachi is a population mega hub of population. It's Yeah. too many people. Bro, we're like a small sized country with a population of kya? 240 million people. Yeah, we're Yeah, like what, the 260 fifth million largest हो गया population in the world? I think Fifth? Fifth. But like I believe fifth we largest. are like a very like Insane, bro. populated country and Densely populated. densely populated. The problem is that we don't have the resources to cater to this population. It's too much. नहीं मतलब there's no family planning in place ना sex education है ना कुछ है, बस बच्चे करी जो. So there obviously needs to be a system in place where people are taught given sex education. Yeah, this should be part of like curriculums as well, so that people get aware of this and it's not looked at as a taboo the way it is by society. Like it's just a natural phenomena, bro. It's a part of life. Everyone does it. We all do it eventually at a time, at a point. Yeah, When and we I get think- married, yeah, when you want to have I and I family, think, bro. and I think It's- people should not look at it as like When you family want to have a planning. family, bro, is what I'm saying. नहीं, We're नहीं, made I'm to saying people- reproduce. हाँ, मुझे Yes. लगता है कि हमारे यहाँ पे ना it shouldn't be looked upon as like family planning. It should be birth spacing. ये नया concept है जो वेस्ट के अंदर मैंने देखा है जो बच्चे कि के लिए आप जाते अपने हैं. बच्चों के दरमियान में ना गैप्स डालो because actually healthy भी होता है कि अगर because a woman goes हाँ. through a lot birthing a child. और अगले अगर साल ही अगला आ अगले जाता साल है. ही अगले अगला साल करो तो it takes a I'm toll on the sure woman. आपको एक औरत की बॉडी को 2-3 साल जरूरी होंगे To recuperate. recover Yeah. yeah. She's not a machine, bro. Yeah, और बर्थ स्पेसिंग अगर होगी तो उससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपका क्योंकि बर्थिंग ईयर्स का एक टाइम होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके एक तो रिसोर्सेज भी इन ऑर्डर आ जाएंगे, आप बच्चे बेहतर पाल भी सकोगे, उनको बेहतर एजुकेशन और बेहतर सिस्टम भी दे सकोगे, एंड इट विल एक्चुअली बी बेनिफिशियल टू द फैमिली बीइंग लाइक बन नहीं जाएगी ना एक हिसाब से आपने प्लान कर लिया फैमिली को सिर्फ स्पेसिंग करके. Yeah. एंड जनरली भी आई थिंक हर किसी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम है कि वो अपने मुल्क के हालात को मद्देनजर रख के और अपने हालात को मद्देनजर रख के बच्चे पैदा करें. क्यों? असल में प्रॉब्लम ही लेकिन ये है ना कि जो लोग हैं, लेट्स से गांव देहातों में जो लोग हैं, why would they take into consideration the burden on the economy and the scarce resources when they don't even have, number one, the knowledge about that stuff primarily, number two, when they're so fixated on just their own internal lives कि उन्होंने तो उनका तो कल्चर है ना बच्चे पैदा करने हैं जी, वो तो एज भी they don't even wait for their daughters to get like
be at a certain age where they get them married and everything. They get married when they're 13, 14, 15, child marriages ho rahi hai, sab kuch ho raha hai. 13, 14-year-olds get pregnant. So they're not mentally capacitated at a point where they understand the responsibility of giving birth to someone and how the suffering economics is going to weigh into that and what's going to happen. Yeah. वो तो अगर उनको बात पता हो फिर तो हम as a मुल्क पता नहीं कहाँ पहुंच जाएं. Yeah. So that's something they but I need to be think made aware of as well. Primarily जो है ना वो सिर्फ अगर आप हेल्थ को into consideration रखो ना और एक फैमिली की economic condition को मुल्क की छोड़ दो, अगर सिर्फ इन दो चीजों को मद्देनजर रखो तो आप फिर भी you can like live in a world where people are more responsible about bringing other human beings onto the planet. Yeah. बट वो तभी होता है ना जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हो या आपके पास कोई एवेन्यू होता है, कोई होता है जिससे आप पूछ सकते हो, जिससे आप डिस्कस कर सकते हो Yeah. कि मेरा इस दुनिया में एक बच्चा या 10 बच्चे लाने से मेरे पे, उस बच्चे पे, क्या impact होगा? मेरी ओवरऑल मेरी फैमिली पे, मेरी बेगम पे क्या फर्क पड़ेगा. These things are such a taboo in our society. ये कोई बात करने को तैयार ही नहीं है इन चीज़ों पे. Like schools में तो छोड़ो, कोई इस तरह गैदरिंग में भी बैठ के लाउंज आपकी जो डिनर कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ये इस तरह की ये चीज़ें कंसिडर ही गलत की जाती है कि ये इन पे बात नहीं करनी फॉर एग्जांपल. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक वी ब्रिंग अप दीज टॉपिक्स एंड लेट द यंगर जनरेशन नो दैट इट इज़ ओके टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. एक्चुअली इट्स नॉट ओनली ओके, इट्स important to know about, to get educated in sexual education, to know what your body can or cannot do, what you should go towards, what you should stay away from. Especially if you live in a country जहाँ पे इतना ज़्यादा taboo भी attached है इन बातों के साथ और आप नहीं कर पाते ये बातें. Like I don't remember like any teacher in my life telling me about these things. Like it's also awkward for parents to talk about, which it shouldn't be like that. But I really like hope के कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे लेट्स से कि ऑकवर्डनेस खत्म हो जाए. मतलब अगर ये बातें ऑकवर्ड हैं एक माशरे के लिए तो एक ऐसा निज़ाम हो कि भाई लाइक देयर इज अ सिस्टम वेयर यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स विदाउट लाइक another human being present. But this is also there is I'll tell you about that system. Yeah. हाँ, no, that's actually true. That's what I was gonna get to कि ये जो चीज़ इसने बोली है ना, where because even in schools it's a part of your curriculum. They have to बाहर teach के you. मुल्कों में हाँ, नहीं यहाँ पे भी like O level से पहले बल्कि 8th के अंदर होती है जब वो चैप्टर. वही तो मैं कहने लगा हूँ कि 8th के अंदर I still remember कि हमारी जो क्लास थी उसके अंदर this girl was doing this reading of a chapter which had the word sex in it. ठीक है? And she refused to read it. Like while she was reading वो होता है ना कि टीचर सेलेक्ट कर लेता है कि आप जरा ये चैप्टर पढ़ो. उसने पढ़ना शुरू किया और जब सेक्स का लफ्ज आया तो उसने नहीं पढ़ा वो. And then the teacher skipped it as well. So the responsibility also lied on the teacher to understand कि एक तो ये curriculum का हिस्सा है. And if I make it awkward, then obviously the entire class is going to feel such as well. Yeah, because and that's the impact that's going to be lasting on those 20, 30, 40 children for the rest of their lives. Yeah. The first time that thing was brought up in a public situation, और वो बोला ही नहीं. with it in a very awkward. Yeah, and, if they just ignored that the word exists. Yeah. Like the so thing he's is, right. If without people, if some thing happens, मतलब कोई चीज हो कि मतलब कोई इंटरैक्शन के बगैर कोई एक ऐसा हो यार. There is this chatbot. It's called the Viya chatbot. Actually, look up chatbot. It's a chatbot. You can chat with it. अच्छा वो जिसका called AI Viya. chatbot होता है. Viya, what's उस the type का है spelling? कुछ VIYA. Viya chatbot. It किधर has सर्च करूं? ऐप स्टोर पे? you just No, go browser on पे, I your would say. browser and search. I'll अच्छा, even मतलब put the link in the ब्राउज़र पे डाल description. दूं. मैंने गूगल कर दिया. हाँ, Viya chatbot तुम करोगे Google उसके ऊपर वो आ जाएगा सारा. Viya अगर तुम्हारे कोई health related chatbot. exactly health related all your sexual unanswered awareness के लिए, questions sexual about family education के planning, लिए, sexual family planning website के आ लिए गई है. बहुत ज्यादा जो भी तुम्हारे burning questions हैं जो कि if you feel like you're too awkward to ask anybody, you can ask अच्छा this WhatsApp chatbot. पे है. Yeah. मैंने उस पे लिखा है ट्राई और चैटबॉट और वो क्लिक किया तो वो WhatsApp पे ले गया और वो WhatsApp पे आप कन्वर्सेशन Yeah, कर सकते yeah. हो. So Yeah, I think solutions like बंदा है these जिससे बात in a करोगे country आप. like ours, no, you're not talking to a Oh person. damn, bro. You're talking to a अच्छा, ये fit है. chatbot. Like There's it's like- a bot. Oh, अच्छा, yeah, sorry. Achha, I didn't know that there's birth control pills for men as well. I don't Yeah. know. Or I maybe didn't it's know that for either. it's written for women, I think. A vasectomy will make men lose their sexual power and become weak or impotent. Bracket Shavi Jafri. Myth.
No. मैंने उसको क्या Fact is, हेलो अच्छा नहीं, so this is like, oh अच्छा So इन्होंने myths भी answer guys, किए मेरे। guys, get off your phone. तुम लोग बहुत ही मैं excited बस हो गए हो. interested अभी था, से सवाल bro. पूछना शुरू हो गए अच्छा नहीं, तो हो. basically इससे से आप जो भी पूछते सवाल what is पूछोगे- condom? Why it's not Why? working? ये तुम्हारे मसले हैं शावीर. हमें इसमें Danny full हमें इसमें मत indulged into धकेलो. the conversation. ये वो मसले नहीं है हाँ। जिनसे But हम anyways, तो इसका नाम विया है, विया। Viya chat. ब्याह वे वाकई ये तो नहीं ब्याह। कह रहे इनडायरेक्टली कि ब्याह करके ही ये हाँ, जिन्होंने I don't know. करना तो ब्याह वैसे होया, हाँ, उन्होंने हाँ, उन्होंने भी ना हाँ। तो वो कह रहे हैं कि ब्याह कर लेते तो अनु लेकिन देखो ना यार, सानू तो देखो फिर कुछ भी नहीं पता when you होएगा। hit when नहीं you नहीं, hit पर पता पहले से होना चाहिए, आई थिंक। होना तो चाहिए you hit your puberty हाँ। and your body is letting you know that Experiencing like these feelings. these changes and these times, bro. feelings. As a youngster, if you don't know or if you don't have the right knowledge, हाँ। you're not gonna know what the hell is going on with you, right? Yeah. Thank you, Baba. क्या मतलब? My dad at the age of 9 actually just told me, like when I asked him what sex, he just told me what sex is. Oh. Yeah, so he told me everything, which is a good thing though, bro. Bro, Because that's if he hadn't, amazing. I'm he surprised hadn't- because it's so rare to hear that now. yeah, because if he hadn't, then when you're a kid, you don't know this shit. Then you know you go either other. Some other people tell you some other things. You might get Yeah. exploited. So he Controlled, safe Yeah, environment yeah, में yeah. He सब was like, बातें he's पता लगेंगी। curious. He's a kid. He's asked me this question. If I don't answer him, he's Someone gonna else go. will. Yeah, he's gonna go to his friends. Then कुछ भी नहीं पता होता कि ये चीज क्या बन जाए. So he That's very explained everything to me, which is how it should be, That's bro. true. Parents also have. And because a lot of parents don't do that, I think this chatbot is great, यार। Absolutely. Yeah, bro. I think it's a अगर game इससे changer आप in हाँ many. सब कुछ अगर आपको पता लग रहा है कि क्या है और आपको अच्छे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पता चल रहा है, इसका लिंक ऐड कर दो भाई I पॉडकास्ट will में, in because the I description. want I'll also add the link in the description for people who are curious and want to know more Yeah, about their because- sexual yeah, bro, health or because- just get educated in things that they're awkward to ask मतलब anybody people who else. are getting married, इससे I think काफी उनको information मिल सकती है कि Not only that, but just general नहीं, मैं audience, एक just general बहुत public. मतलब strictly पाकिस्तानी बात कर रहा Yeah, हूँ कि yeah, जहाँ yeah. पे Yeah. people get married and they still don't have any sex education, so they don't know what they're doing, how. Yeah, like they're talking about birth talking about works. contraceptives and everything as well, now, which is also a lot of things like people don't हाँ, know यानी about basically यार contraceptives सेक्स and एजुकेशन अगर आपको ह्यूमन फ्री एक्सपीरियंस के थ्रू मिल रही है, इट इज ठीक अ है। ग्रेट थिंग। yeah. And I think audiences like जो हमारा podcast at least देख रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए, because growing up I think everybody who has these questions just doesn't get the answer to them. And Yeah. जो जहाँ से उन्हें मिल रहा होता है, it's just पता नहीं वो कैसी information होती है, क्या होती है। ये तो I'm sure is it like fully authorized information Yep. type ना? There's like Yep. experts on this Yes. app. I Because ये suppose- I website तो guess बड़ी it is. professional लग रही It's very professional. Yes. है। ठीक है, हाँ, It's very like nice. it's like a full organization उफ है। यार, Very good यार। आज हमें Yeah. सेक्स एजुकेशन मिल रही है एआई से, Free में. कल को सेक्स भी मिलना शुरू हो जाएगा एआई से. Humanoids will take over, guys. I'm telling you, we're gonna lose. We need to prepare ourselves. We will be तुम लोगों ने dead. देखा नहीं है जो इलॉन मस्क ने भी किया, बाय द वे? क्या ये? Brain chip. पहली चिप डल गई है ना अभी वो. बंदर, एक बंदर तूने देखा? Oh, Yes, bro. sir. हाँ। तुझे पता है ये जो बोल रहा है? मुझे ये पता Neural, what is it? वो Neuralink. 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 Neuralink एक बंदर एक गेम खेल रहा था Neuralink से, मैंने वो हाँ, नहीं, अभी Khan. उन्होंने they're testing it out They on. tested. They inserted that inside of a human now. हाँ. और वो ह्यूमन ने They're control testing. किया। नहीं, Yes. they're testing it on people who He was यार, blind, like right? disabled और इस तरह के कोई इश्यूज हैं जो अच्छा। उसने एग्जांपल यार, दिया था स्टीफन हॉकिंग का. वो कह रहे गूगल करके बता। मैं वो गूगल करता है कि उसने वो बोला you था know, कि it's like imagine Stephen Hawking had the ability to like walk or talk. talk. A lot mostly. I of, don't think, like, if walk. that happened, I think a lot of midgets would be in trouble, no? Because this guy was on Epstein's island and he Bro, was how doing- weird, bro. हाँ. वैसे oof. Oh. But That was look, that look, that I was the most surprised out of that. मैं सारी चीजों पे expected मेरा था कि I was निकलेगा ना. like, what is this Yeah, I guy was doing like- on that island? And It's then like- oh my god. It's तूने- like अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज सोची है इस पूरी चीज के बारे में? Do you guys realize this is what Ted Bundy like said? This the exact same thing. Ted Bundy जो हाँ हाँ, the serial serial killer. Ted Bundy ने एक चीज बोली थी कि you don't realize how much sex plays into like criminal activity. The psyche of sex basically. तुम लोगों ने realize किया कि Epstein की पूरी जो चीज थी, it's just entirely circling around sex.
Of course. At the end of the day, bro. Yeah. At the end of the when you eradicate all the shit that was going on, the levels of like how bad it was and evil and criminal it was, at the end उसको चाहिए क्या था? How weird is that, bro? Like even the Stephen Hawking thing. But like, bro, I'll be very honest. The world is a very, very weird place. It is, bro. Like Epstein wali ye sari cheez, and like We know very little. very little. very I little. feel like it's not surprising. He died in his cell when died he in was his cell before where he was could supposed to testify be or be in kept. court. Huh. He didn't have his day in Committed court. suicide. Maybe he had a story to tell. I don't know, man. But like, it's very scary stuff. Yeah, खैर। bro. यार तुम लोग ना बहुत सीरियस लाइट बातें करते हैं लाइट बॉयज हाँ, मेरा दिल बैठ जाता है, पता है ये बात, मुझे बहुत डर लगता है इन चीजों सही से। बात है यार मेरे पास ना एक फन स्टैट है फोन के अंदर मैं अच्छा। तुम लोग से शेयर करके तुम लोग की ओपिनियंस लेना चाहता हूँ अच्छा, more than opinions I just want to see how you guys react to this. There was this guy, अच्छा, his name was Jonathan Jacob Meyer, a 41-year-old guy. Danny तेरे से 10 साल बड़ा. Dutchman, a sperm donor, is believed to have fathered 550 children. A sperm donor. A sperm donor believed to have fathered 550 children. He is being sued for increasing the risk of accidental incest. He never heard of a sock. साले वो sperm donor है. उसका काम है ये. No, extent for accidental नहीं तो incest. उसकी क्या गलती है? That the kids उससे that he's मेरे- had, they might end up Clinic को like. नहीं sue करना चाहिए. हाँ, जिसको like वो I was देता हो. like you इस would बंदे का नाम imagine. क्या है? विकी? नहीं, Jonathan Jacob Meyer. Oh lady. ये वो वाली ये movie Vicky- है. He could be fined 100,000 euros per infraction. इसका नंबर है सिर्फ? Infraction होता क्या है भाई? रुक एक तेरा नंबर है इसके पास? इन्फ्रैक्शन क्या होता है? ओए infraction क्या होता है? Dan? Infraction? तू स्टोरियां लिखता है बता. नहीं क्या तू क्या? राइटर टाइप infraction यार. Will पूरा be जुमला fined पढ़ना। $100,000 per infraction. इन्फ्रैक्शन तो होता है जब लाइट जाके बेंड होती है तो उसे इन्फ्रैक्शन कहते ओ बस मैं समझ गया. तू बाकी बात भी बोल मैं समझ गया. हैं। क्या ये हो रहा है खिड़की यहाँ खोली पे. मैंने सीधा लंदन तक। एक सेकंड में साला बच्चा बाहर. अच्छा. The court also ordered him to write clinics abroad, asking them to destroy any of his semen that they have in stock, except doses reserved for parents who already had children by him. Very weird. ये ब्रांडिंग कर रहे हो छुप के हमसे? नहीं यार ये कल वो मो व्लॉग्स आया था उसको तुलसी खिला रहे थे हम. तो कर दी ना ब्रांडिंग ये से देखा कर दी पागल है ये देखो जरा यार. और यार ये अनार तो कटवा दो. ओह अच्छा प्लास्टिक के. So अच्छा 550 बच्चे. 550 बच्चे उसके. तुम लोग की क्या like what do you guys think about like the fact that somebody could have 550? Yeah, I I actually- think there was a- 550 थोड़े ज्यादा A है. little too much. कैसे ज्यादा है? मतलब 550 दिन में, मतलब मेरे हिसाब से तो 550 का आधा क्या होता है? 225. 275. You one could do it like a fertile man could do it in 225 days. 275 days. 275 days. 225. But every single time the पता नहीं 270. woman has 250 to into conceive, 275 या 275. हाँ. the woman has to then conceive. हाँ वो तो Every कर single रही वो है तो ना luck सारी. का है ना फिर. हाँ Then तो it's पर- all luck. पर मैं कह रहा हूँ like 100% सक्सेस रेट पे 275 दिनों में कर दे शायद. यार इतना नहीं हो सकता. क्या हो हाँ. गया? साले पागल हो तुम. नहीं क्या लेकिन machine थोड़ी चलो हो तुम क्या भाई? 3 साल हो गए होंगे 4 साल नहीं, लग गए इसको होंगे पैसे 5 मिलते साल लग गए, थे क्या हो डोनेट गया? करने के, हाँ. या पैसे मिलते हैं आपको क्या? पैसे Yeah, मिलते yeah. हैं. अच्छा. हाँ bro, Sperm do. why else do You you can think become a I'm sperm क्या able हर to दिन एक afford this different shit? personality में आता था. Danny कह रहा है, how do you think I afford this shit? It's not music bro. Not so thick she burning. ऐसा हस्ती तो लाइन लिखी सी थोड़ा इसके जरा गाने की लाइन है पता तुम्हें? क्या? ये भी इसका एक गाना एक सेकंड आया let's था. let's see if he knows if he I makes have up with it. no idea. Go Not on. so thick she burping. इसका क्या मतलब Yeah, है? yeah, of course. This I is know. hands down the most ghaleel line in music to have ever been written. ये Bro, मेरा- एक सेकंड में मजे की बात था. I just wrote this line as a filler. ठीक है, शुगल में मैंने कहा ये भी मैंने गा दी है. लाइन क्या लिखूं आखिरी? I just freestyle it. मैंने कहा ये अब जब गाना फाइनल होगा ना तो फिर मैं ये चेंज कर दूंगा. I had heard the song like 1,000 times and whoever heard it they never picked up on it. मैंने कहा एक दिन मैं और लिस्टर थे, मैंने कहा वो लाइन बदलनी हो. बस हम बैठे, मैंने कहा यार वैसे अच्छी लग रही है, अब तो सुन भी लिया I है, didn't इसको pick क्या up on पता it चलना है. And then they just put on subtitles, bro, like the captions in the video. Exactly क्या है? फिर से बोल. Nuts That so just gave it away. And I was like, bro, thick. बता nuts so thick. not so thick. She burping.
कहता I added this line as a filler. This was a filler, bro. फिलर Oh, अच्छा. हाँ, तो तो खैर वो- सोच भी नहीं सकता कि तूने सोचा कैसे ये But इसने it लाइन got- विकी के लिए लिखी है but it got people talking about it and thinking so Hang like. on, Vicky Donor. हाँ, ये विकी जो डोनर की reference बात की करी जा बात रहा है कर उस रहे वक्त से, bro. तुम लोग continue करो. चलो वापस आते हैं यार कैसा था सुसु Susu was warm. वार्म फ्लो पीता भी flow है किया था। तू, बाद में उसे Well, you पता can है. tell, bro. यार पता ना वैसे एक से सुसु तुम की लोग धुआं क्वालिटी निकल चेंज रहा होती था. Hold रहती on, है one sec. तुम लोगों का जो पी you when you Water, guys pee. तुम लोग का जो water. मैं क्या कहूँ, पेशाब sounds just too nasty. सुसु पिशी सुसु, पेशाब पिशी. जो Okay, भी पिशी. कहना है Urine कहते हैं. तुम लोग का urine जो है, do you guys like it's warm or is it like normal? It's warm, नहीं मैं अपने obviously. हाथों पे नहीं मारता उसको नहीं यार उसका धुआं तो उठता है उसका ना धुआं हाँ, उठता है. हाँ, हाँ, हाँ। This नहीं, is- जब बाहर अगर अगर सर्दियों में आप normal करो भाई, ना, सर्दियों में भाई तो इतना धुआं hot है? सर्दियों में तो धुआं उठता है heavy. हाँ, good. हाँ. Yeah, everything normal guys. क्या ये मेरा खड़ा Move खड़ा- on. And जो धुआं उठता है that is the only smoke he smoked That's not smoking. No, That's but like something else. But यार, inhaling but the पता ना smoke. कई दफा like peeing is so fun Oh. sometimes. Oof, bro. It's like Peeing and taking a nice dump ओए, are two ओए. of the most underrated feelings, bro. ये उस Like दिन मैंने especially- बिली आइलिश की वीडियो देखी थी वो उसको हाँ, Billie डिस्कस Eilish कर भी रही यही थी। कहती अल्लाह की कसम, bro. इट्स माय फेवरेट एक्टिविटी वो तो हमजा ने जो मजा आता है ना भैंस की दुम favorite singer Billie Eilish. जब आप शूट Billie से वापस Eilish, आते हो ना, Favorite singer और Billie आप Eilish. अपने बाथरूम जाते She हो likes pooping. और उसके बाद आप जब लेट जाते हो फुल हल्का शल्का होके लेट तो आपका तो अब इंस्टाग्राम Have you guys ever weighed yourself before and after like a big shit? I already know it's like a kilo at least. किलो 1.5 किलो का तो Yeah. मुद्दा होगा साले, तुम गोश्त नहीं लेने जा रहे शॉपर में किलो 1.5 किलो दे दो. नहीं it's नहीं about- कई दफा किलो का भी होता है How many times you इजी shit in किलो a का day? हो सकता है क्या हो गया Once or how many? हाँ, 1.5 किलो. Once. Once a day. My metabolism is way. रूकी नंबर्स Rookie numbers. तुम लोग का क्या You बहुत gotta- ज्यादा frequent? You gotta pump those numbers up, Gotta pump pump those numbers up, bro. खाकू तेरा? Once मेरा भी स्लो है मेटाबॉलिज्म वंस तो है ही है और हाँ. twice Sometimes भी हो too, जाता yeah, है sometimes. डिपेंड्स Really? हाउ मच यू ईटिंग By the way, Jesus, mine bro. isn't even consistently once. हाँ नहीं, It's like तो- sometimes bro. once, sometimes zero. None? नहीं नहीं Sometimes you हाँ, एक need दिन to बाद. then Sometimes increase your after. Bro, then fiber you Some need to people like have IBS. No, some people have IBS. no but तुझे अपने में भी फाइबर शाइबर को इंक्रीज करना चाहिए ऐसे मैं तो- सब वो कौन सा कुछ brand है? try करके सब कुछ ट्राई करके देख लिया ब्रो. नहीं. इस पे गोल सारा मुल्क गोल रहा है ये मुफ्त के हम ब्रांडिंग कर रहे हैं bro. देओ पैसे सर मैं I'm the only one who has like at least 3 dumps a day. Yeah, there's something wrong with you. No, bro. No, it's- no, my bro. metabolism is 100%. perfect. ब्रो नहीं, 3 नहीं, दफा good, four good. सुबह उठ के डैनी तेरे ठीक है, एक सेकंड, पिछवाड़े सुन में तो कोई You- मसला है. नहीं सुबह नहीं उठ मसला के- नहीं है यार have you not like listen to his songs of course he's taking 3 dumps a day he's putting all of that on paper और हम सुन रहे हैं बैठ के no like एक तो नाश्ते के फौरन बाद फिर एक जिम I'm के sitting फौरन right in बाद the middle of you guys. अभी इसने ये जोक मारा है. जरार हंसा नहीं. Danny had a fake laugh. No, I had a real laugh. Khakan was laughing but not enthusiastically. I'm मैं- in the middle thinking, is it like हंसूं या ये हंसो? offend तो नहीं हो जाएगा? मैं तो सही हंसा हूँ मैं क्या Danny, offend जब होगा? तेरी कोई जब तेरी कोई taking करता है इस तरह, तू offend तेरी होता कोई है? ले टेकिंग करता है नहीं bro, मैं शावीर नहीं हूँ ना मैं सेंसिटिव नहीं हूँ मैं तो ओए, बहुत ब्रो मुझे तो fashion बहुत crazy. मजा आता है मैं अपनी खुद टेकिंग करता हूँ ब्रो लाइक इट्स आई थिंक इट्स समथिंग और अगर इसने बताया तो था ले लो टाइप ले लो. I lay low. no I think if it's like us if it's like people close to me of course it's chill I have Or had random people do it. I have had like encounters where like for instance I once went to this time I went to Lums right this is like Coke studio के फौरन बाद सही है and they called me for like this talk and everything I was like fit यार Lums ने बुलाया है बहुत आला Stock क्या मतलब? a talk अच्छा, this talk Okay, okay, हाँ okay. so I took my mom with me I was For like you a know stock. For a stock. So I was like यार मुझे लम्स में बुलाया हुआ है तो टॉक एक छोटी सी है तो आप आ जाए साथ उस वक्त सिर्फ कोक स्टूडियो का गाना आया हुआ तो उन्होंने फुल कहा वी वांट यू टू कम टॉक अबाउट योर इंस्पायरिंग जर्नी है वो सारा मैं कहा चलो मैंने उन्हें सारी अपनी कहानी सुनाई इंडिया में क्या हुआ यशराज अलादीन दिस एंड दैट किस तरह कर कर आके अब ये फाइनली कोक स्टूडियो का ये गाना आ गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड देम दैट द सॉन्ग दैट्स आउट इज ऑल्सो लाइक नॉट रियली मी मैंने फिर अपना गाना एक गाया
which was a very Radiohead Pink Floyd inspired song. So I was like, this is actually me. And I was extremely vulnerable. Bro, पूरी चीज़ खत्म हुई है. तो उन्होंने मुझे कहा कि we have a small skit that we've prepared for you. Do you mind if we like, you know, just do it? मैंने कहा fit है. And my mom's there. And that skit was like, it was like a farewell पे होता था ना, हम लोगों ने बेइज्जती करनी है शदीद लेवल की. बस वो skit एक वो थी कि कोई कोक स्टूडियो का कोई हेड बना हुआ था और बस उसने कहा है कि हमें कोई नया बच्चा चाहिए, वो नेपोटिज्म ये वो, उसका एक काम करो, एक हमें चिकना लड़का चाहिए, हमें एक चिकनी लड़की चाहिए, मोमना को पकड़ लेते हैं, वो कौन है किसका भाई, बस था कि ना कोई पूरी चीज हुई. सो आई वाज लाइक चलो, लाइक दिस इज लम्स, like they've called me here, I get what's good humor and I get what's what, but my mom's here as well. If I would have planned this, if I was on the other side of the fence and if I had planned this, I might have like, you know, been like, yaar, thodi si ek line nahi shayad cross karte. So I felt, and 2-3 things that they said were like just a bit too much. तो मैं वैसे nice हूँ, मैं chill हूँ. I saw my mom, I laughed it off, I went home. And then just I got these messages from a lot of like LUM students. Okay, we're so sorry that you had to deal with that. Those people don't represent us and that wasn't nice. Like they called you as a guest and ye nahi karna chahiye tha, etc. etc. So I was like, actually, you know what? मैं कुछ ज़्यादा ही शायद nice हो जाता हूँ. Because I felt what they said to me and I was like, हाँ यार, ये शायद थोड़ा off. Like you don't want to call someone as a guest, have them talk about your inspiring story and do all of that stuff and then just be like, you and your nepotism, bro. No, yeah, Ye but le lo. like also, So I agree, I was I like, agree. this is the best university of Pakistan's intellectual level. Good for you, man. No, but I also had a very similar experience with LUMS. Recently, they also invited me to like a talk, and my experience with them was very weird. I just didn't end up going because they backed out one day before. It was very weird. Like I was like, you guys invited me to a talk. Why are you backing out a day before? So I was like, maybe that's how they do things there, but I was weirded out. There's And then later definitely a abhi sense of like entitlement, I think, I that don't know. prevails. Like my brother maybe. went to LUMS, so I have nothing against LUM students. I don't, love but one of somehow them. some LUM students that I come across and speak with, Yeah. bro, it's like they just like, you know, like it's like fuck you, bro. I think ऐसे लोग हर जगह होते हैं. हर There's जगह always होता that है. It has crowd nothing to do everywhere. with like the institution. But having said that, I think है एक there is. Bro, I think मैं what बताता happened हूँ. with I'm- Danny, I'm if it talking had about, like, happened with me, I would have walked off, honestly. I think what happened with it, the 100%. way he explains it, it's pretty disrespectful. And if whoever did it And from the he's always institution... explained like these things that have happened to him. Or you're right, you are too nice in these situations. हाँ, तू हंस देता है. हाँ, Maybe मुझे थोड़ा सा- मतलब मुझे था कि मैं क्या करूं यार, like how do I respond to this right now, like what do I do, you know? I don't know, I think like maybe just Honians के साथ नहीं एक चीज हो गई हुई थी एक point पे. I think, I don't know if it's still the case right now, but there was a point where people were like, oh, if you're dealing with an Honian, of course you're gonna have like this crazy sense of entitlement where they're gonna think that they're the shit, whatever. Blazer पहन के आ जाते हैं hotspot के बाहर, जो भी है सारा scene. No offense to them or whatever. लेकिन मुझे एक थोड़ी सी feeling आई थी कि होना शुरू, ये क्या हो रहा है, मतलब क्या scene है? Yeah, What is like I this think pseudo-intellectualism context and setting where- matters a lot. Like if that happened at like an award show where it was happening to every other famous dude, then it would make sense. Huh. So for example, Fair enough. like if I If it was like a roasting event... like मैं इधर बैठे हुए, I can make fun of Danny's music, but like he's also my number one artist on that music streaming And he's platform. also ठीक your है? number one friend. हाँ, like so You he's can there, do I that. can make fun of him. For example, वो कहते हैं ना कि अगर like हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के बारे में अगर कोई चीज या कोई पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कर सकते हैं because हमारा इंटरेस्ट है उसमें. अगर कोई बाहर वाला करता है तो फिर हमें बुरा लगता है, चाहे वो सही भी कह रहा हो, Yeah. चाहे वो वही चीज कह रहा हो जो आप कह रहे हो. So it depends about the intention. It matters about the intention And the when it comes context, from yeah. and the Huh. context. That seemed like that they did not give a shit about my talk. हाँ. They wanted to play तू that टेंशन skit. ले, It तू was बहुत the अच्छा artist है, roast bro. of Danny We Z. love you, we care about Roast you. of Danny I Z. think वैसे Listen, किसी lumps दिन, of no lumps, we care about you, Danny. पता है Danny, you're gonna be a star. मेरा ड्रीम है कि हमारे पाकिस्तान में ना हम रोस्ट्स करें.
Like roast of Danny Z, roast of Shavir. और uncensored, bro. Uncensored. बैठ के बस एक roast. I think session हो. Launda Talk slowly is Becoming moving that. towards that. Yeah. Launda I think Talk eventually तो we'll हम have चारों an का roast episode बन जिसके चुका है ना वैसे अंदर भी। Audience हो, live audience हो. live audience और हम roast करें. Yeah. Actually, Sundas and I did a show with a live audience and it was I saw it. Yeah. amazing. It was amazing. हम लोगों ने करना बहुत चाहिए कम लोग वैसे। बनाए थे, बुलाए थे. Maybe बनाए in थे। future episodes we can do a अभी live हम audience show we're- with Launda Talk. We're as well. going to be putting out 2 episodes in the coming month. Yeah. We're putting out 2 episodes अभी, Yeah. ठीक है? I mean, we're back to back 3 episodes in the next month and a half. ठीक है, 3 episode हम कर रहे हैं. 3 episodes हम करते हैं, उसके बाद let's see what people like say in the comments and क्या होगा, and maybe let's do like a live show Yeah, we and could. make it like change the format up a bit. It could be like a Launda Launda session. Launda session. But like rename Boys, it Launda. नहीं यार. But then we Keep must it have a Launda- structure like proper यानी कि हमने करना क्या है, Keep किस a तरह Launda का- talk यार and वो- have the audience and जिस तरह and make overlap it का real show whatever नहीं है, questions fan they debate, have तुमने they देखा throw in. था? हम जो बात कर रहे हैं उस Sky पे किसी ने Sports का कुछ जो पूछना है overlap पूछ वाला लिया. show है जिसमें Gary Neville मतलब वगैरह बहुत आते हैं। इंटरेक्टिव सा मैंने एक वो CBS चीज हो वाला सकती है ना. अच्छा Interactive Basically वो वो format press अच्छा है कि conference type आप हो जाएगा. ऑडियंस से Full भी नहीं boys नहीं वो इस अपना तरह नहीं करेंगे, कि वो अपना anyone with a question next ये question हम- you नहीं ये like पॉडकास्ट के अलावा हम बात करते हैं. हाँ, ये भी पॉडकास्ट पे तो ना डिस्कशन हाँ, करेंगे कि okay. क्या करना है Anyways, बाद में. yo, करते हैं. roasting से मुझे एक चीज याद आई कि self roasting, which also means the most embarrassing story of your life, one by one. I मैं told नहीं you guys बता to रहा prepare that. मैं नहीं बता रहा कुछ ये गलत बात होता है. If we all go, we all go. और मैं सबसे एंड में जाऊंगा क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है तुम लोग अच्छी वाली नहीं बताओगे और मैं अपना मुझे सही लगा था नहीं ये बताऊंगा. टॉपिक हम नहीं कर रहे इसलिए मैंने नहीं सोचा और जो वाहिद मेरे दिमाग में बात है वो मैं कभी बता ही नहीं सकता मैं जो मेरे दिमाग में बात है वो मैं बता ही नहीं सकता bro. वो 100% यार जरा और बता दे. What I've also done I can't say it on camera bro. Trust me, the story that I have, मेरे it पाँव cannot be वो worse मेरे than- पाँव के बाद ना मैं एक और चीज नहीं ब्रिंग अप कर सकता इस पॉडकास्ट में उस तरीके क्या उस वो भी level की क्या वो खराब है? नहीं 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 Sorry. ये मैंने कुछ किया मैं गलत चला, मैं कहीं और चला गया. बट आई थिंक एम्बैरेसिंग स्टोरीज की जब हम बात करते हैं ना, Hmm. ब्रो मेरी जिंदगी में कोई इस तरह की 1 या 2 है, नहीं बता सकते आप यार. आप सारी जिंदगी ना आप ट्रोल होते रहोगे. वो उस तरह वो क्या वो बेचारा टाइगर श्रॉफ की तरह. क्या उसने क्या? टाइगर श्रॉफ का वो वीडियो नहीं है जिसमें वो लाइक ही सैट एंड लाइक फार्टेड. इट्स ऑन वीडियो. Yeah he sits and he farts. हाँ, he sits Oh. and he farts. तो वो उसका तो everything is just like that. Yeah, I think nahi, if you, because he probably played it off as if like he's still cool and he didn't fart. No, he didn't. He didn't. He, Right, like just it's one of those Cool, he things. just didn't For fart. example, I was in an interview. Hmm. Yeah, this is a true story. It goes back not more than a week. So yeah, I was in Okay. an interview. I was actually taking interviews, and while I was conducting the interview, I thought I was letting out a quiet one, Okay. and I was very wrong, obviously. And You- it was Was it a loud shart? no, definitely not a shart. I would have A shart is when you shit Shit yourself and also. fart. And fart at the same time. it was a fart, but it was like one of those where I tried everything to cover it up, right? It was way evident. It was too evident. But because I don't know the person I was interviewing like personally, I was like, holy shit, I'm there are only 2 of us. सही, अब हम 2 ही हैं. अब उसको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई ये मेरे से हुआ है. माइक पे आ ठीक गया. है. नहीं, माइक क्या मतलब? इंटरव्यू क्या हो रहा है? इंटरव्यू साले मैं किसी को हायर करने का इंटरव्यू ले रहा था. ओह, अच्छा. हाँ, shit यार, वीडियो नहीं उसको है तो इसकी. नहीं वीडियो नहीं है ना. अब हुआ ये कि ब्रो मैंने यूं किया, ठीक है, और उसके ये मूवमेंट के बाद वो टाइम भी ऑफ था उसका, ठीक है. तो जब मैं वापस आके सेटल डाउन हुआ ना तब हुआ है, आवाज ठीक है, मेरे से जुर्म. अच्छा, अब उसके बाद उस बॉय की निकल आई हल्की सी हंसी. अब मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे उसके साथ हंस लेना चाहिए था, है ना. हाँ, कि यार मुझे- पक यार ये हो गया. मुझे एक सेकंड तुमने मुझे क्या किया? हंसना चाहिए था कि यार I'm sorry bro, I'm sorry, right? I was like, so yeah, so you're saying you do this, explain this point. Full serious, and that guy's looking at me with like, yeah, about that. And I'm pretending I'm not seeing what he's doing. I'm pretending that I'm focused on the sheet of paper, that I'm not even looking at him, but I'm peeking, and he's like,
वो कह रहा है बेटा Yeah. तनख्वाह डबल है अब So तो bro, double that happened. Insane. That happened. Not more than like maybe 8 days. कभी जिप में फंसी है? What the उफ ब्रो, ये तो मुझे हाँ, सुन के ही मुझे दर्द होना मुझे शुरू हो सुन के गया। याद आ गया ब्रो, ये मैंने जिंदगी बड़ा में ब्रो, ये मेरे साथ जिंदगी में एक दफा हुआ था, Same. उसके बाद से मैंने अंडरवेयर पहनना शुरू किया था ब्रो। Oh damn. कब हुआ ये? परसों टाइप? That's a good one. नहीं ब्रो, तुझे कैसे अच्छा पता वो खासा, परसों तक अरे अंडरवेयर नहीं पहनता था? शावीर इस बात अच्छा पूछे। खासा मैंने इतना खुला काला अंडरवेयर पहना तो हुआ। बट पॉइंट ये है कि ये बचपन मैंने में तो असल में डिटैच करके रखा बट मैंने ना मैं बचपन में आई थिंक ग्रेड 4-5 या 4-5 की बात होगी, बच्चे शुरू करते थे 3-4 से अंडरवेयर हाँ। पहनना है ना, मैंने 4-5 तक नहीं शुरू मैंने किया भी था, वैसे ही। 5-6 तक ना 6, 7, तो 8, 9, 10 तक। ब्रो वन डे तुम लोग पागल हो? नो इतनी देर? यार अच्छा, बस हाँ, दिल नहीं करता था sorry, ना, हाँ, अजीब लगता था, यार, चुपता था खुल्लम ये डुल्लम, वो। खुल्लम Yeah. डुल्लम। हाँ तब Let पता it नहीं flow. हाँ ना You बस gotta दिल let the करता था कि balls हाँ just क्या like- पहनना है, सारी Okay, जिंदगी you कभी know, पहने ही नहीं निकरों में don't स्कूल want जाते थे to हाँ, No, निकरों में no, जाते no, थे। rolls. उसके बाद पैंटें शुरू हुई तो बस नहीं समझ आई कि हाँ नहीं जरूरी, ठीक है। हाँ। खैर एनीवे एक दिन स्कूल में ना और अब समझ नहीं आ रही कि ये निकालना है, ये क्या करना है, ये तो अब मतलब ये कहीं कट ना जाए, क्या ना हो जाए। एंड देन लाइक आई रियलाइज्ड कि नहीं ये रह नहीं सकता, इसे निकालना पड़ेगा बिकॉज दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। सो देन आई करके मैंने निकाला Then I एंड आई वेंट होम एंड आई लाइक टोल्ड मामा कि ये मेरे साथ हो गया और मुझे आज पता नहीं बड़ा मुश्किल दिन गुजरा How मेरा old were ये you? वो। आई वाज ग्रेड 4 ग्रेड 5 ना, बच्चा How old were you? 10, 11, पता नहीं 10, क्या ऐसा 9, एज होती है 10, 9, 10, 9, 10, हाँ। तो ब्रो फिर उसके बाद से फिर अंडरवेयर बस Bro, पहनना शुरू हुआ और उसके बाद से जिप मैं बंद भी देख के करता रहा हूँ, अभी तक बंद देख के करता हूँ। मेरा अभी ध्यान क्लास नहीं 2 में करता। हो गया था हो गया था और मेरा ये ऑब्वियसली बाथरूम में हुआ था। इसकी सुनते But इस तरह मैं ब्रो चीखें मारना शुरू की हैं और आया आ गई और मैं बहुत छोटा था तो मैं रो रहा हूँ और मैंने कहा ये हो गया है बॉस। फिर क्या वो तेरी आया ने ठीक किया था? हाँ तेरी आया ने ठीक किया था फिर? आया ने ठीक किया था। मैं 2 में था या 1 में हूँगा और उस दिन से फिर मैंने भी अंडरवेयर पहनना शुरू कर दिया था और उसके बाद से मैं आज तक आई एम सो केयरफुल जिपिंग अप माय पैंट्स। अच्छा मैंने तो अंडरवियर पहनना ही शुरू किया था जब मेरी स्कूल में पैंट फट गई थी सारी ब्रो, फ्रंट से पीछे, लाइक द एंटायर थिंग ब्रो वाज गॉन एंड आई वाज लाइक ओह शिट ब्रो। और अच्छा ब्रो ये नहीं था कि इधर से फटी है सिर्फ ब्रो, यहाँ से लेके पीछे तक और मैं वो पूरे इकट्ठे करके उनको यूं जोड़ के यूं चलता हुआ जा रहा हूँ पेंगुइन की तरह ब्रो। और अच्छा उस दिन ब्रो I have never had that many people. मैंने ग्रुप में एक स्टिकर भेजा है। अच्छा देगा ये बहुत डिस्गस्टिंग ये वही वाला है जो प्लीज मत देखना बॉयज, देख रहा। अच्छा प्लीज मत देखना, बहुत बड़ा है। ये रात से याद है ये तो तुम फिर क्या ऐसे घर चले गए? ब्रो मैं ये इस तरह 100% डैनी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये Bro, Oh my god, I'm actually done. मैं क्लास के अंदर बस बैठा रहा, सबको पता लग गया, bro. वो बात फैलना शुरू हुई है। बात अच्छा और फैल उस गई। दिन Oh. कभी भी इतने ज्यादा लोगों ने मुझसे आके नहीं पूछा होगा तुम अली जफर के छोटे भाई हो? अच्छा सबको पता लगा कि वो अली जफर के भाई की पैंट फटी। हाँ और आज ये क्योंकि वो उनके दिन थे नए नए छन्नों वाले वो सारे, तो वो ब्रो ऑल द सीनियर गर्ल्स ये वो, और मैं पेंट को यूं रख के बैठा हूँ, वो सारे कितना क्यूट ये वो, और बस यस यस Oh my थैंक god, यू bro. एंड देन आई हैड टू वॉक। तुझे तो याद है ना तू बीडीसी में ही था। तू किधर था बीडीसी में? मैं तेरे को Exactly. बताता हूँ, ये एक तो ग्राउंड में फट गई थी पूरी, ठीक है सबसे पीछे जो मिट्टी की जो मिट्टी की ग्राउंड थी वहां फटी थी। हाँ। अच्छा छुट्टी के टाइम तुझे याद है हम वो पीछे वाली जगह जाते थे बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। लड़के अलाउड नहीं होते थे, Yes. ठीक है, वो उधर मेन गेट के साइड पे होती थी मैं जगह, समझ गया, right? पिंग पोंग टेबल हाँ, पे पिंग पोंग टेबल, हाँ, सही है। उधर से मैंने मेन गेट तक जाना था और मुझे उस दिन लेने भी मेरे अंकल मुझे मोटरसाइकिल पे आए थे वापसी भी वहां खाते गया। और बस मैंने अपने कोई 2 दोस्तों को अपने पीछे खड़ा किया है,
एक को आगे किया और अपनी पैंट पूरी इकट्ठी करके ना पीछे से आगे से यूं करके तो टांगों के दरमियान फंसा के तो पेंगुइन की तरह ना लिटरली मिलीमीटर के स्टेप्स चल के मैं यूं 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 गया। सोचो पीछे हमजा खड़ा हो इसके। हमजा कौन? हमजा सोहेल। हमजा से क्यों उसका नहीं उस टाइम पे साथ नहीं उस टाइम पे वो बीडीसी अच्छा। नहीं आया था। अच्छा उस टाइम ये उस क्या time- कब की बात है? ग्रेड ब्रो दिस वाज लाइक grade 4 आई थिंक 5 इस तरह कुछ करके। तेरे अंकल मुझे लेने भी मोटर हाँ ब्रो मैं मोटरसाइकिल पे गया हूँ मोटरसाइकिल पे ऐसे करके तू sideways कैसे बैठा था ऐसे फिर? करके बैठा। ब्रो बस मैं मोटरवे कह रहा हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा उसी तरह था लेकिन बस मैंने ना पेंट को खींच के ना नीचे से और ऊपर से यूं हाँ। तो बस पकड़ा हुआ था उससे। So in the front, anyone if they came and saw, they could see everything. तुझे अंकल ने But- कहा तो नहीं थोड़ा पीछे होके बैठ? बच्चा है वो छोटा है। नहीं सीरियस लाइक नहीं वो बेचारे मुझे क्या ही कहना था वो तो बस थे कि बैग रख लो। मैं क्लास That is 3 में था, embarrassing. एक लड़की थी हमारी क्लास में जो मॉनिटर होती थी। ओ यार जहर लगती थी ये मुझे भी bro। कल्चर होता था क्लास मॉनिटर। जहर लगती थी क्योंकि वो ना स्टील के फुट्टे से आपको मारती थी। हाय, क्लास हाय। मॉनिटर? हाँ वो जब टीचर नहीं होती थी ये ना कौन सा उसको स्कूल किसी- था? यार मैं एक आर्मी पब्लिक में था जब मैं क्लास अच्छा। मुल्तान में था मैं तब। तो वो ना ऐसे हाथ पे आके करती थी कि मत बातें करो टाइप, बहुत मतलब वो Weird ओवर थी। पावरिंग टाइप सी वियर्ड सी लड़की थी। हम्म। तो खैर मुझे बहुत जहर लगती थी। तो एक दफा वो एज मॉनिटर टीचर के पीछे खड़ी हुई है, टीचर हमें किसी चीज़ पर डांट रही थी। उससे पहले उसने टीचर से पूछा कि मैं बाथरूम चली जाऊँ, तो टीचर ने कहा नहीं अभी मैं ये कर रही हूँ तो उसके बाद तुम जाओगी। उसने बीच में फिर से पूछा कि मैम बाथरूम, टीचर ने कहा नहीं अभी मैं टेकिंग कर रही हूँ उसके बाद तुम जाओगी। क्या कर रही हूँ? टेकिंग कर रही थी ना हमारी कि तुम लोग चुप नहीं अच्छा करते, ये टीचर वो वगैरह। अच्छा ओके। ब्रो एकदम ना आवाज आना शुरू होती है पट 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 पट, मतलब पट 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 पानी पट टाइप पट। गिरने की ना। और टीचर ने पीछे देखा, ब्रो दिस पोर गर्ल शी पीड herself standing behind the teacher in class Oh, in Jesus, front bro. of everyone. Why did I think that sound like a shit coming हाँ, out though? I was under the impression she farted. हाँ टिप 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 अच्छा, she peed herself completely. No, she She- peed herself. She peed herself. In front of everyone. Shit. और बच्चों ने देखा, बच्चे हंसना शुरू हो गए as they do, और वो बेचारी रोते रोते क्लास Oof, bro, what a traumatic experience, man, for उस her. दिन That is- मुझे Oof, फाइनली यार. उस बेचारी लड़की That's बता very आया। मैं कहा ये बहुत जहर लगती थी मुझे, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ इसके साथ। यार तुम हाँ। लोगों के साथ कभी स्कूल में ऐसा हुआ है कि तुम लोग का कोई बहुत ही खड़ूस टीचर हो और तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त की हंसी ना रोके? बहुत हाँ ये हमारे साथ हुआ हुआ है। ब्रो मैं तुम लोग को एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग कुत्तों की तरह हंसी जा रहे हैं। फुल मैथ क्लास चल रही है, सर इज ट्राइंग टू फोकस राइटफुली सो, एंड वी आर जस्ट नॉट। ये BDC की बात है? बीडीसी सही है। तो सर ने ना पहले तो हमें अलग कर दिया। अब हम जितना आप जब आपको हंसी बहुत ज्यादा आ रही होती है ना और आपको कोई रोके तो आपको और ज्यादा आना शुरू हो जाता है, बिकॉज यू कैन कंट्रोल दैट फीलिंग। We're not even looking at each other, but we can sense that, we can sense that he's laughing, so I'm laughing too. Yeah. So सर ने क्या किया, सर ने मेरे दोस्त को कहा कि जाके ना दीवार की तरफ कोने, ये दीवार का जो कोना है ना पीछे तुम्हारे, सही है, उधर मुंह तुम यहाँ जाके ना दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अब ब्रो तुम अंदाजा लगाओ अगले 45 मिनट के लिए एक बंदा दीवार के कोने पे यूं खड़ा है। तू ना खड़ा हुई ओए, हाँ तू ना खड़ा हुई कोने में उल्टा हो चेक गया। करना जरा कितना फनी है ये। यानी कि वो 45 मिनट यूं खड़ा है। अब हंस के I can't fucking For 45 minutes, this guy is standing like that in the corner. And the entire class, but me especially, bro, it's the funniest shit. Especially when you know you're not supposed to laugh and there's somebody, Yeah. जब देखो यू करके जेनी की तरह कोई कोना करके खड़ा हुआ है। वो भी खड़ा रहा 45 मिनट। 45 मिनट खड़ा रहा उसको, वो भी हंस रहे खड़े होके साला। तूने वो तेरा भाई वाला कल्चर एक्सपीरियंस किया था बीडीसी में? नहीं ब्रो, he tells me some horror stories क्या? कि वो टीचर्स को थंब पिन्स रख देते थे टीचर्स की चेयर के नीचे। मैं तेरा भाई वाली कल्चर की बात कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा भाई है? वाली कल्चर की क्या मतलब? तेरा ओए, भाई ये वो कौन एक सा दूसरे culture को बस था? कहना कि तेरा भाई, तेरा हर भाई बात कि के जब जवाब टीचर में। कह रहा है कि तो हम ये एक्स को निकालेंगे और वाई से हमें क्या मिलेगा, तेरा भाई। ओ नहीं ये नहीं तूने मैंने नहीं किया? अच्छा, मैं ओह, अयान का समझ रहा bro। था। अच्छा हमारा- हम तो यार, TMKT हमारा कहते थे। TMKT होता ये था तेरा भाई, तेरा भाई। TMKT क्या? अच्छा तेरा भाई। नहीं TMKT होता है। यार। बताएं जरा सब बताएं।
क्या था? I was almost there. I was like, मैं यहाँ तक Oh. पहुंच गया। पक्का ही ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ BDC ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਓਏ ਝੂਠਿਆ कसम से bro यार boys, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ताड़े हाल। मुझे तो ग्रेड 8 में जब मुझे किसी ने पहली दफा गाली दी, मैं रोने लग गया था bro. ये तुमने पिछले पॉडकास्ट में बताया बताया था। हाँ, आगे बढ़ जाओ। सॉरी यार क्या हो आज तक ऐसे कैसे आज तक ट्रॉमा में हूँ ब्रो। तुम लोगों ने फड्डे शड्डे पहले तेरी कोई लड़ाई नहीं हुई यार मेरी, मैं बहुत मम्मी डैडी बॉय यार मैं तुम लोगों ने फड्डो शड्डों के लिए कभी कुछ वो नहीं किया? नहीं। एक शो बनाना पूरा कि मैं फड्डा बड़ा होगा। हाँ टफ गाय तब हुई तो हो। फुल गैंग्स कल्चर भी होता था और Gangs में culture। तू माइल हाई क्लब का मेंबर है? मुझे पता है वो क्या है, यू कैंट फूल मी। तू है मेंबर? मुझे पता है वो क्या है, यू कैंट फूल मी। मतलब आप तो we're not for me asking you। नहीं, Of course not, no. of course yeah not। Of course not. तुम हो? Bro, do you think तुम I'm a लोग की तो fuckboy? शादियां नहीं हुई भी यार, तुम लोग क्या हो भी कैसे सकते हो? जो हाँ तुम लोग एक दूसरे 100%, से you know ये सवाल पूछ भी क्यों रहे हो? हाँ तुम मैंने लोग तो- खाली ये सवाल मेरे से पूछ सकते हो और मैं नहीं हूँ। ये दानियाल तो माइल लो का member। क्योंकि ये ले लो करता है बस। माइल लो ग्राउंड लेवल क्लब ये माइलो का मेंबर है, मैं हॉर्लिक्स का मेंबर हूँ ब्रो। यही सीन है। फुल अंडरग्राउंड हाँ जी। बेसमेंट में ना। या तो अच्छा, ये तुमने दानियाल से पूछा कि तुम्हारी अभी करंटली कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? हाँ तुम्हारी कितनी है? करंटली मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है शादी और कर एक ली बीवी। फिर एक बीवी। नहीं नहीं वही बीवी वही गर्लफ्रेंड। ये जिंदगी Same। में चाहिए मुझे। जो बात है हाँ, ये जो जिंदगी यार में देखो मैंने वैसे तुम जज्बा, लोग loyalty जिन is जिनकी शादी everything। हुई है ना, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ तुम लोगों को देख थैंक के। यू। क्योंकि क्यों? the way Just you sounded guys weird talk the way you about- said it, but Yeah, no the I way allow guys you to talk continue about with your that wedding thought। na, and the way we used to perceive being married before Yeah। our friends started to get married is very different. Yeah। You guys are very happy. Yeah। You guys are, and maybe एक cultural or generational difference भी है कि when you looked at an older generation, हमारी parents की generation, जिस तरीके के वो you थे calling आपस Shavi में, Road? वो अपने पेरेंट्स की जनरेशन की बात है। जिस तरह वो सारे एक दूसरे के साथ थे और जिस तरीके के रिलेशनशिप्स तुम लोग की अब हैं शादियां करके, they are miles apart. Yeah, So it's और- something I look forward to now. Yeah, and watching his life, मुझे the thing I really look forward to ना, जिस तरह अभी हम इसके घर नीचे आए हैं, हम ये कॉफीज बनाई है हमने, ठीक है। एक तो हमने कॉफी बनाई है और उसके अंदर ना उसने बोला चीनी डालने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। हमारे पास था शहद डाल सकता है इसमें, या फिर कोकोनट शुगर डाल सकती है ब्राउन कलर की, या नॉर्मल शुगर डाल सकती है। डोंट फॉरगेट गुड़। हाँ, गुड़ भी डाल सकता है। ये 4 ऑप्शंस थे एंड आई थिंक ओनली मैरिड पीपल कैन हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा होना तो मेरे घर शायद मुश्किलों से चीनी होगी क्योंकि मुझे परवाह इसके घर शादी से पहले चीनी होती थी, सिर्फ चीनी होती मुझे थी। पता और अब बस इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं और बस इतनी फिट कॉफी बनी है और हम कह रहे हैं गुड यार, ये भी अच्छा सीन है। कोकोनट शुगर कोई चीज होती मुझे पता ही नहीं था। ये मुझे भी नहीं पता था। I found out today coconut it's sugar very is good. a thing। It's amazing. It's like Yeah। derived from coconut water। कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट Coconut वाटर होता है, से कोकोनट शुगर होती है, कोकोनट ऑयल होता है। कोकोनट शुगर इज derived from coconuts। But your marriage was a love marriage, right? My marriage was completely a love marriage. Yeah. is the I- love still alive? Oh yeah, man. It's actually, I think with time it gets stronger. Like I'll tell you, like मैं बताता हूँ. So I'm not talking about the honeymoon phase or the butterflies in your stomach that you feel when you like somebody for the first time. Obviously that only happens once with one person. It won't happen again unless you break apart and then you get back. वो एक, course, of I course. guess वो एक अलग feeling है. But when you're with somebody and you start living with somebody, क्योंकि हमारे यहाँ live-in relationships नहीं होते, तो आपको शादी करनी पड़ती है live-in relationships के लिए. I have experienced this relationship to be like, I have no doubt that this is literally the best thing that has happened to me. Aw. And I say that with full confidence कि ज़रार ने जो अभी बात की कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन और हमारे आइडियाज़ थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा माइल्स अपार्ट हैं. आई फील लाइक दैट्स ट्रू. हमारे पेरेंट्स की जनरेशन का जो लव है और हमारा जो लव है वो बहुत मुख्तलिफ है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन आप जब सोचते हैं ना आपकी पेरेंट्स की जनरेशन का लव, तो उसके अंदर आपको एक ऑकवर्ड एलिमेंट नजर आता है. क्योंकि Yes, Instagram नहीं था yes. ना. हाँ
हाँ नहीं ये सही That's कह रहे true. हैं। Yeah, I Like mean, मैं मुझे अच्छी तरह याद है, I used to work at Walmart, तो मैं जब देखा करता था ना कि देसियों को, क्या तुम लोग हंस क्यों रहे हो पता नहीं यार? ज़रा हंसता, मैं तो सुन रहा था। तेरी शादी से हमारी जिंदगी में एक बड़ा डिफरेंस आया है कि तूने केमो वाली पैंट्स पहनना छोड़ दिया। but the color is still alive, my No, friends. but I think like a woman's touch in your life does bring about good changes, such as brown sugar, So. these things, all of the things that. I've he's Explain mentioned. more. I've never, What did he say? I've never तूने experienced कहा the ना privilege women's of touch in your woman's life touch. brings a lot. मैं और बता फिर. No, I तू ये think explain And करेगा. also not to reduce a woman down to coconut sugar and good clothes. No. Yeah, of what is course. wrong with wow. you, man? अच्छा नहीं, I actually just realized that Zarar का एक ज़हन वो on हुआ है No, कि ये तो नहीं हो रहा कि we're just domesticating all women and we're no, So clarify it. Obviously, women are much more than just housemakers. I'm not saying that, but definitely a woman knows how to live life much better than a man does. Like Hands we down. literally Hands do down. not know what clothes to wear. bro, look at how do we not- shower. Yeah, we like if women weren't around, would we be showering daily? Would we be like caring about how we look and all? I think these are all like feminine traits to have. Being like cutting your nails, Being and presentable, showering, being appeasing presentable, to and being yeah. like having comfortable cushions. Like cushions alone is like, I think if girls didn't exist, men probably wouldn't even think we need cushions, you know. So that's what I call a woman's touch. Bro, a have woman you- understands how Have to you live not life. seen that post that's always around that men really be just, you know, like content with this and it's just an empty room और एक उसमें एक गत्ते आगे गत्ता है और एक टीवी है, Yeah, bro. और- That's literally, bro. हाँ, That's लिखा होता है कि men really be do living like this and yeah, think it's cool. that's true, bro. That's just how. Side पे एक टिश्यू बॉक्स बस. हाँ, बस हाँ, नहीं जो मतलब बात है। अगर रोल लिया बहुत ज्यादा फिल्म देखते हुए तो उसके टाइटैनिक लिए- अगर आपने हाँ, देखी हो। और देखी है अगर तो- टिश्यू नहीं तो जराबे भी चल रही हैं। हाँ, जराबों से भी आंसू मुंह Oh, साफ God. कर रहा, हाँ। एक ही तौलिया है। हाँ, बस वो हद हाँ मतलब पता है मुझे जिंदगी में बड़ी देर बाद जाके पता चला था कि जिस तौलिए से आप नहाते और बॉडी साफ करते हैं वो मुंह पे नहीं मारना वो मुंह पे होता। नहीं मारना होता हाँ, bro. ये मुझे बड़ी देर बाद ये पता मुझे भी चला बहुत देर था। बाद पता चला था. The ये towel मुझे अभी पता लगा है. But अच्छा। go on. The towel you dry your with, you don't necessarily have to dry your face with it as well, bro. Yeah. No, No. But what if if you you dry your face first. First, So that's what I do. That's Listen. Yeah, So शुरू कर हाँ तो दीजिए। तुम लोग stupid हो, दो टावल लेके घूम रहे हो. सिर्फ अपना मुंह पहले साफ कर लो और अच्छा, फिर वो अव्वल टावल तो ये को है कि ये भी एक Dry- औरत की उसमें- बदौलत मुझे पता चला था कि मुंह के ऊपर तौलिया नहीं मलना Tissue चाहिए. मलना You should, चाहिए। you should not use a towel on your face. You And should you use should a मलना tissue. चाहिए। you वो should tissue tap और tap करना चाहिए. टैप करें या एयर ड्राई अपने फेस को टैप करके ड्राई करो. रगड़ के रेग मार के जो हमने अपनी अच्छा, मैं skin का बहुत हाल किया रेगमाल था। मारता होता था because I used to think कि वो लाल हो जाता था ना मुंह. हाँ कि ये तो मुझे सफाई हो लगता रही था है। कि ये सफाई हो हाँ, जाएगी. और उतने Deep breakouts scrub, होते मुझे थे लगता बाद था में। deep scrub is also like this towel bullshit that you have to do, bro. कि रगड़ के साफ करो. और हाँ मुझे भी जिंदगी में ना यही लगता था कि जितना जोर से करोगे, अच्छा फेस वॉश लेके करोगे तो मजा आएगा और साफ होगा. फिर मुझे पता चला कि नहीं, जब आप मॉइस्चराइजर आराम से तो हाँ. ऐसे अच्छा, एक और चीज था तुझे पता थी, ये भी मुझे रिसेंटली पता चली है. When you have to moisturize your face, you should not moisturize a dry face. Yeah. You should like have a little bit of Oh, like a yeah, damp yeah, face. damp थोड़ा सा face, पानी हाँ. जरा लगा के so it absorbs मैं better रोज and वाटर it's पहले स्प्रे करता हूँ. हाँ, फिर और उसके उसके यार, ऊपर मैं बहुत लगाता हूँ. आला और मैं आपको एक बात Bro, बताता हूँ. यार, आपको- ये बहुत- ये आपको मैं zesty- हैक all भी of बता us रहा on हूँ. this zesty shit. ये मैं हैक भी बता रहा हूँ. अगर I don't know आपको- how many guys are relating to us, but I think every Every single girl girl is यार एक relating to पॉइंट us. पे But आके ये ना लड़कों बॉयज को भी स्किन I wish केयर more करनी guys पड़ती can. है. पड़ती है. जो तो अगर- तुसी आ जाओगे ना 24-25 26 टाइप, वो तो 30 तक है. हाँ. लेकिन और क्या मैं होता है यार, अच्छा, ये और क्या हम खुद होता है? वैसे दानियाल Sad to कितना my mind, इजीली क्या हुआ? 23-24 का बना. उस हिसाब से तो मैं भी अभी कल 21 का हूँ. हाँ. वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला था, लेट्स सी यू एट 21. मैंने अभी वो जूदर की सेल्फी लगाई. हाँ, देखा मैं था. देख रहा हूँ. मैंने कहा यार का मैंने कहा मैं अभी 21 ना का ही हूँ. झूठ. हाँ. Yeah, but that did अच्छा, बट मैं एक हैक बताना चाहता हूँ. अगर आपको ड्राई स्किन हो रही है ना, तो आप यही अपना डैम्प फेस लेके उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाओ और उसके ऊपर वैसलीन चिपका के ना सो जाओ. सोने से पहले वो करो. हाँ, सोने से पानी पहले पियो. वैसलीन ऊपर लगे पानी और पियो. पानी पियो एक ग्लास. Yeah. आपको अगले दिन परफेक्ट स्किन मिलेगी. अच्छा, my mom with the rose water thing ना, my mom actually said to me that do the skincare रात को, where you use the cleanser, use the moisturizer, use the Vaseline and everything. सुबह उठ के she actually does not use the cleanser again. She just washes the Yeah. face with rose Natural water. oils. हाँ,
and then as the फिर उसके बाद हल्का सा हमें moisturizer like a day आता है cream कि and then सुबह as फिर the cleanse ना करो, face wash ना use करो, just wash your face. Yeah, and go with about your day for water. a while. yeah, I think it's more important to actually brush your teeth at night and wash your face at night, because that's when you are actually. No, it's important to brush your teeth at dirtiest. night 100%. 100%. And also in the morning, but washing the face, I also don't. but wash my have face in water the morning. before you brush your teeth in the morning because there's bacteria that's That good is for you good as for the well. gut. For you. It's Yeah. good for the gut. So before you brush your teeth in the morning, You should drink So I, water. Yeah, drink, you should I drink actually water. drink coffee before I brush my teeth. हाँ, क्योंकि वो वैसे येलो स्टेन आ जाता है तो फिर मैं उसके हाँ बाद ही- बेसिकली हाँ मैं तो पूरा नाश्ता कर लेता हूँ Good है. पहले मैं नहीं करता था कि पहले ना दांत साफ करने बट फिर मैंने रियलाइज किसी ने मुझे बताया डॉक्टर ने कि जो बैक्टीरिया फॉर्म होता है इट्स वेरी गुड it's good for your gut. Yeah. वो बहुत Very जरूरी है. interesting, yeah. I mean, I think people actually, most men downplay and don't take skincare or all of these health benefits that we are talking about seriously, but I think they really should. Especially That's why like- you look like you're 60 when you're 40. exactly. Yeah. आधी Yeah. ज़्यादा like आप especially अगर आप थोड़ा सा गांव शाव में चले जाओ तो वहाँ पे जो 20-20 साल के लड़के भी होते हैं वो 40-40, 45-45 साल के लग रहे होते हैं because of the fact that they're उनकी तो always चलो out in the sun and their hardships, skin. Sun. No, because sun हाँ, actually sun destroys definitely. your skin. And I'm coming to that ke there was this I think Time magazine ने एक picture लगाई थी एक बंदे की. He was like roughly around 50 or 55, I think. Half of his face, he was a truck driver. तो उसने कोई 25 साल ट्रक चलाया और इस साइड पे ना majority of the time sun रहता था. So half of his face was completely like messed up, wrinkly, and super bad. The other one full tad. Considerably. Wow. No, sunscreen बहुत जरूरी है bro. Like protection from the sun. हाँ जितना बेसिकली सनस्क्रीन अगर आप लगाते रहोगे ना तो आप जिंदगी में 60 साल की उम्र में भी शायद 40 के लगोगे क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो आपकी स्किन को एज नहीं करने देता क्योंकि सूरज आपकी स्किन को एज कराता है अल्ट्रावायलेट रेज इन द सन तो आप हम लोग जो शहरों बेसिकली हम जो आजकल की जनरेशन है द रीजन वी लुक यंगर and I think this is also very interesting because we look younger than the Gen Zs also. The Gen Zs are getting older. पता है ना? The Gen Zs actually look older than we do. हाँ, अच्छा, if you're Yes, talking in the yes, sense yes. that when I was 15, I हाँ. definitely did not They look the way like a 15-year-old like kid, 15-year-olds look That's right now. because these But then guys I get take too much confused कि stress. do you no but then वो तो है ही है. हाँ. I also think is it also because of the fact that they're exposed to such fashion as well as the way they carry themselves that I they think with look Gen Zs, it's mature. just stress. It's just वो तो It's है ही stress. है वो तो But सोशल मीडिया के अंदर ब्रो अगर हम हमारी जिंदगी के अंदर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इफ आवर स्ट्रेस लेवल्स चेंज सो मच naturally speaking Gen Z जहाँ पे जब हम when I was 14-15 तो I used to go out play football we were talking about it that day as well there used to be a whole routine Yeah. you didn't have to tell your Internet neighbor नहीं होता था. हाँ neighborhoods मतलब बच्चों को नहीं बताना पड़ रहा कि यार आज कितने बजे फुटबॉल होगी ये होगा वो होगा it was an understood thing 5 p.m. we're gonna meet at the park कोई नहीं आ रहा उसका अगले दिन पता चलता था यार कि मैं वो क्यों ये नहीं आया. हाँ क्यों नहीं आया ये हो गया वो हो गया Yeah. अब तो you're on your phones there's so much that's happening there's so many substitutes to like you know not just form a culture like And that I've in your also neighborhood noticed and that Gen Zs take internet a lot more seriously than we do. yeah Like we bro. grew up with the internet and we actually learned how to We cope with it. experienced the internet in a way where we slowly जैसे जैसे वो बढ़ रहा था Yeah. हमने उसका stress के साथ Manage adapt करना करना Bro, we सीखा। realized the internet is a digital world and not a यार, real हम जब world. Facebook सोचो पे- आप These 15 साल people- के बच्चे हो and you're seeing what's happening in Gaza right now. हाँ. It's a very different way to perceive and those emotions. also generally I think like when we were growing up our Facebook was what 10 people 15 people max 20 people the famous people were 100 likes Yeah. ठीक है yeah. अब जाके वो जमाने ही नहीं है हर बच्चे के 100 150 200 लाइक है the scrutiny they go through is a lot more than what we faced growing It's the up social dilemma. It's the social media gratification that's also come into Yeah. play now, where you want the numbers to dictate and give you that dopamine and to make you feel कि हाँ यार, like you know, I felt it. We all feel it when we post something, bro. हम जब post करते हैं, there's a specific chemical that's released in our brain that makes us really look forward to the notifications we're going to get, the comments we're going to get, the number of likes we're going to get. And we dissect everything and the negative ones affect us, the positive ones make us feel really good. And it comes to a point, हम लोगों ने तो because we've dealt with social media differently, we saw it coming into society. So we still may be able to detach our real world with that world. Yeah. I don't think these kids are able to detach that, bro. and I For feel them, really- it's their I feel it's really their bad for life. these kids because they also like it's also in
the seriousness of the things that they write. Like you read like a young kid's tweet and you'd be like, oh my God, this kid thinks that I this... couldn't articulate the way he does at 15 when I was 15. Yeah, ek to haan, we couldn't articulate that way, which is good. But also the way they take this app seriously and this tweet seriously, how serious they think this matter is a bit concerning. Because at the end of the day, you need to understand that you are living here and these are the people that surround you. This is your family. Please be worried about these things only. Don't be so and your real consumed friends by the internet. and your real friends, bro. और जो होते भी 3-4 maximum 5-6 दोस्त होते हैं आपकी. That's it, bro. I think हम जब बच्चे थे और Facebook था या जब Instagram start हो रहा था, तो the only things we would post were silly things. आप अपनी पुरानी Facebook photos देखो ना, in every one of them you'd be doing a weird pose. आप as a group भी weird चीजें कर रहे होते थे. Being silly, being funny was the thing. No one wanted to be sexy when they were, 14, 15, 16 on Facebook. So I think because वो social gratification अच्छे लगने से, sexy लगने से, hot लगने से आती है, तो वो they're always worried about these things also, which is why they take a lot of things very, very seriously compared to us, because we were just having fun. अभी ये हुआ है ना, Mark Zuckerberg, he was held accountable just recently, यार. What that thing that happened, bro, तू check कर, तुझे शायद पता चल जाएगा. जहाँ पे उन्होंने the dark side of social media, they discussed it now, where people have taken their lives and everything. How like online bullying and like talking about, I think I'm talking about the right thing, but ये अभी हुआ है, like Mark Zuckerberg, पूरा एक scene हुआ है Capitol Hill के अंदर यार, जहाँ पे they've spoken about this entire thing, कि how like there is a dark side to this entire thing, where like सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो किसी बच्चे के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आ रही है. लाइक फॉर देम इट्स they don't know what the तू हंस क्यों रहा है? Okay, bro, we sound like our dads. But it's true, bro. Literally, like this is all my dad used to cry about like 10 years ago. Now he is more hooked on to TikTok than I can ever be. No, but see, हम लोग फिर भी जो TikTok और Reels का culture है ना, bro, this is only like what 2-3 years यार old. मेरा हम लोग फिर भी we came in, when we were in this entire world ना, it was still, there was still check and balance, you can say. तू समझ रहा है? Orkut, Facebook, MSN का जो ज़माना था ना, that was much different than how things are right now. Because there was a balance in life, what you call a balance, which was कि थोड़ी सी outdoor activity, थोड़ा सा homework, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, और थोड़ा सा social media. Abhi 80% social media, even while working, even while studying. Yeah. Right? So I understand there's like a huge takeover, but that's what I'm saying with, like, it's part of evolution. I mean, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, जब ये मशीनें आई हैं, इससे पहले क्या इंसान क्या करते थे? ज्यादातर फार्मिंग ही करते थे ना, राइट? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले फैक्ट्रीज तो नहीं होती थी. सो आई थिंक the point that I'm trying to make is that with every new generation and every time a new piece of technology, like something mind-blastingly new comes in place, it takes a few generations to really go back and see the results of that. I think we are in the very super early stages of the technological वो तो yeah, like Kanye says, bro, we're a blip in the universe. वो तो वैसे ही if वो you तो बहुत ही बहुत next level. No, what I'm saying is considerably अभी से बेहतर है कार्ल सेगन ने जो पेल ब्लू डॉट बोला है वो बोल लेते हैं. Insane, bro. पेल ब्लू डॉट बड़ा Kanye कह रहा है we're a blip in the universe. No, मैं तो पूरी चीज को कंसाइज करके कह रहा हूँ. मतलब obviously वो तो है ही है. लेकिन point अच्छा Masters of Universe कौन बता रहा है? Kanye West. नहीं, बात उससे सही की है, bro. We're a blip in the universe. हाँ. मगर basically वो पेल ब्लू डॉट को उसने blip कह दिया. हाँ, जो भी. मेरा लेकिन पता है, I agree with evolution. Obviously, bro, that's a part of life. That's what happens. हम लोगों के साथ वो चीजें होंगी. The new generation is gonna feel different, and they're gonna call us old because we're gonna call it like, कि ये नहीं सही. But my point is, when machinery came and farmers turned to like industrial revolutionists and everything changed in terms of that technology, उसके अंदर the mental state of being was still differently affected than it is right now. I have no idea what you just said. मतलब but it sounded like you mean something. नहीं, मतलब नहीं said है, मैं समझ गया हूँ. हाँ, basically social media. Would you agree and say that right now the mental health dilemma is at its worst? Yes. In the world. Yes. So that's my point. Yes. Part of the reason for that is what social media has also done. It's because you don't have this is also called the first world problems. When you have George Carlin, Louis C.K., he's a comedian. He says this. Okay, when That you guy don't who have, off?
Yeah. The same guy. Yeah, the guy who got cancelled. Also. Yeah. The guy who got cancelled. Yeah. He said when you don't have real problems, and he says people in US, we don't have real problems, so we make shit up. For example, we're in a plane and we just got to know that there's internet on the plane. Like you're in the plane and you can use the internet. So he's like, I log in and I'm just going on the internet, I'm browsing the web, and there's a guy sitting with me and he goes like, this is bullshit. And he goes like, how weird कि इसको साले को पता भी नहीं था कि इंटरनेट था यहाँ पे, लेकिन अब ये कंप्लेन कर रहा है कि ये स्लो है. Like it's such a कहता है कि everybody in the plane should just always be shouting because you're sitting in the chair in the air. Yeah. Bro, it's unbelievable. यार तुम लोग आजकल ड्रामे कर रहे हो सारे. How many dramas are you doing? I'm currently doing one. The Ramzan. How many Pe dramas Dil are Pe you doing? Dastak. I'm doing one. I'm writing one. Yeah. 100. वो लिख रहा है बॉय, शर्म करो. तुम लोग खाली एक्ट करोगे, वो बॉय डायरेक्टर बन रहा है. आप क्या कर रहे हैं? I'm a YouTuber. हाँ? I'm a YouTuber. I'm a YouTuber. उसने कहा है कि उसकी स्क्रिप्ट नहीं पसंद आ रही लोगों को. नहीं वो फर्क है. यार वो दानियाल फर्क है. सुनने में आया, कोई खरीद नहीं रहा. क्या स्टोरी? ये फिर हम वापस वहीं ये चले क्या जाएंगे स्टोरी conversation. नहीं है, ये क्या स्टोरी है. क्या है ये बंदा क्यों है इस पॉडकास्ट में? यार ये दानियाल कितना सक्सेसफुल यूट्यूबर बैठा है, कितना सक्सेसफुल शेफ बैठा है स्लैश एक्टर, एक इतना कन्वेंशनली गुड लुकिंग इंसान आपके साथ हाँ. बैठा है, और एक ये मायाकाल बिठाया हुआ है साथ जिसकी स्क्रिप्ट नहीं कोई उठा रहा. क्या स्क्रिप्ट, तो किस स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है आजकल? यार Yeah, बहुत कम it's- लोग होते हैं जो कि लिखने में इंटरेस्टेड होते हैं. Like I'm actually glad that you're writing. No, I'm writing 3 scripts right now, basically. One script is a film that I've been writing since 2020 COVID. That's like very close to me. Then there's a वो ये जो drama. तुम दोनों मिलके लिख रहे थे एक जमाने में. नहीं वो भी हमने एक चीज शुरू की हुई थी, वो भी करूंगा कभी. लेकिन अच्छा. then there's a drama that I'm writing. And then there's another film that I'm writing, which is the 2 female. Obviously you'll act in these projects. Yeah, of course. That's good. Because I couldn't like wait around to like see कि क्या अच्छा रोल आएगा, कि ये ऐसा मैंने करना है. I know what I have to offer, and I was like, bro, मैं खुद लिख लेता हूँ. Ultimate power. यानी कि Power of full Nepo. The power of Nepo. रोल नहीं मिल रहा, मैं खुद लिख दूंगा bro. खुद producer. No, like my Producer brother before. isn't aware of it as much, and I haven't like उनको मैंने भी कुछ भी नहीं बताया हुआ कि किस तरह क्या flow है. So I'm कोई gonna. उन है ना तुम्हारी जिंदगी में? उन हमारी जिंदगी में उन ही नहीं है कोई. हमारी जिंदगी में अन कुछ भी नहीं. उन उनके बगैर भी तेरा ड्रामा फुल टीआरपी कर रहा है इस वक्त. हाँ तो अच्छा, वो लोग कहते हैं यार कि ये ना इसका ड्रामा nepo- बहुत अच्छा nepo जा kid रहा है, खाकान. I've heard a lot Why about is he Khaqan in recently. every क्या project? nepo know- kid? You People say I'm a nepo kid. बेटा देखो. जिंदगी- Listen carefully, coming from a nepo kid. Go on. Listen carefully, guys. मेरे बच्चे होंगे nepo kid 100%. मेरा है ना एक, चारे के साथ देखो क्या हो रहा है. इधर बच्चा है? अच्छा, by the way, तू तो उसको कुछ और कहता था। I actually did not know this. क्या? लेकिन मेरे साथ पता है 2 जगहों पे ये हुआ है कि someone pitched me a drama, और एक ना कोई लड़के का रोल होता था, अजीब सा कोई, ठीक है, और मैं कहता था कि ये रोल कौन करेगा, और आगे से मुझे 2 डिफरेंट लोगों ने पता है क्या पूछा है, ये अभी हम देख रहे हैं, क्यों, खाकान से करा दे. And I was like, are you like throwing some shade at me in some way? अच्छा, तो तुम्हें कहते हैं कि खाकान से करवा हाँ, कि जिस तरह क्योंकि उनको के लगता है कि तुम implying इसको- के दें? like वो कि तुम पुश कर रहे कि हो मैं मुझे. पुश कर रहा हूँ तुम्हें, हाँ ना और यार, पता मैंने नहीं ये क्या है. कम- I'm like, because bro, I think chill the the fuck interview out, I bro. gave, उसी इंटरव्यू में जब मैंने बोल दिया सवाल This के is जवाब pre में- that. हाँ, These pre that. occasions are pre the interview. Oh, Yeah, but they I was think- like, अच्छा, no. they think कि हम full unit बना के चल रहे हैं. हाँ. Why not? हाँ, why not क्यों? वैसे? पूरी दुनिया अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी नेटवर्किंग पे चलती है. अगर हम 4 लौंडे अगर इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो हम ऑब्वियसली एक दूसरे को पुश करेंगे. खास तौर पे जब हम बाहर में चाहे बाकी पूरी दुनिया. खास तौर पे जब हम 4 और लौंडों हम को करते कटाया हैं भी जा रहा है. और actually I think it is a great thing to push your friends and to like make sure that all of your friends do well. It's a good thing. That's Why actually should true. only fathers push their sons? You know? Yeah.
Why is nepotism only through blood? It can also be through relationships and friendships. But you don't call that nepotism, you call that contacts. You call that relationships. friendopism. What do you think Business is world what do में you what do you आपको हर think वक्त is कहते हैं कि nepotism by आप the way करो। in its purest यार मैं form? बताता हूँ nepotism. Google definition ना नहीं नहीं मुझे। नहीं मैं आपको बताता हूँ nepotism in its purest form ना is के you want to be something and your father gets you the access to that door that has that thing. Like Or your family. or your family. Like मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. हम्म, बेटा ये जाओ उन अंकल से मिल लेना. हम्म। वो अंकल भी कह रहे हैं अच्छा यार ये इन्होंने भेजा लेकिन है. after a certain point, it's your talent that Yeah. talks. Yeah, For yeah, example, 100%. Ranbir Kapoor. I think we have already mentioned this in the previous Launda Talk that we did. कौन सा जिसकी ऑडियो डिलीट कर दी थी आपने? नहीं उससे भी पहले वाला एक. यार ये जो हुआ है ये हमारी जो जितने hardcore सारे fans लोग को पता पूछे होगा. जा रहे थे ना कि लौंडा टॉक क्यों नहीं आ रहा इन भाई से बात Sorry करने। guys. हमने एक Solve रिकॉर्ड किया और इससे This is the ऑडियो guy. डिलीट होगी. इस बेचारे ने लैपटॉप में इस बेचारे ने मेरी बड़ी मदद भी की. इसने बड़ी कोशिश की आके ऑडियो को रिवाइव करने की. इसने नहीं फुल हुई. सांसें सूसे मारी. उसके अंदर CPR दिया. भाई ऑडियो पता नहीं कहाँ गई कि वो और मुड़ हम ये के उसने दोबारा वापस रिकॉर्ड नहीं कर आई. रहे हैं. So we have to record this. बट यार रणबीर कपूर इज रियली टैलेंटेड. आई थिंक Bro, दैट इज तुम लोगों ने एनिमल देखी है by the way? अभी नहीं I have to watch it. I I'm yet watched to half watch of it. it. I'm yet to watch सारे it. कह bro. रहे थे बहुत फजूल है। No, मुझे no. भी मैं I was I'm pretty sure under it's a the good impression movie. I was Animal watching देख लो. something so It's a bad. good discussion to have because मैंने एनिमल देखी और मैंने कहा कि because everybody is saying it's a really misogynistic film. It portrays everything that is bad in society and like violence promote हो रहा है and everything. But it is damn good cinema. It is हाँ, what so that is cinema all is supposed true. to be. Bro, You know? violence तो Tarantino पता नहीं that कब is से all क्या true. कर रहा है. Like I Coming from a hate this Tarantino fan, conversation, bro. When people say Yeah. कि violence नहीं होनी So चाहिए. when you Bro, take what the fuck yeah. are you talking when you about? It's a take movie. creative, exactly. When you take a creative concept and you make a film on it, and then people discuss the legalities or the morality of that, I like, to me it doesn't make much sense because यार वो एक creative piece है. वो एक हाँ, art हाँ, है. हाँ, So हाँ. you have to just look at it like art. तुमने मनोज बाजपेयी का वो इंटरव्यू सुना? कौन सा वाला? Yeah, मनोज बाजपेयी gave this really good interview. He's वो गालियां देता है. नहीं नहीं अच्छा, जिसमें वो वो तो लड़की विजय होती है वो राज- उसको विजय राज इसी ने बारे में बात कर रही होती है and she says what do you have to say about these films that portray misogyny and like toxic masculinity and all of these things. ये तो society को किस तरह का मैसेज दे रही है फलाने वो. He said if you want to take the onus of holding such films accountable for the effects they're going to have on society, then what about that entire population in the world? If they start taking an onus against films that show the opposite of Yeah, what you're talking about, 100%. which is the open culture, sex and drugs and alcohol, Yeah, etc., yeah. etc., नहीं, and नहीं, like not even just that, it's just like, it's misogynist people start saying Barbie shouldn't be made. Why should it not be made? You know? Yeah, कि it's- Barbie जो है ना हमारे बच्चों को सिखा रहा है कि फेमिनिज्म अच्छा है तो बारबी बैन कर दो. गलत बात है भाई. exactly, bro. इस तरह if you guys basically if हर- this lot is heard about the creation of art, तो फिर bro. हम रिपीट उस अच्छा, हम conversation पे repeat. चले गए. मगर लेकिन- हाँ ब्रो एनिमल के अंदर अब मैंने एनिमल की अगर बात करें लेकिन bro मनोज बाजपेयी की बात तो चेक कर यार. ये तुम लोग कर मैं ये एडिट करेगा ये. अच्छा नहीं बट एनिमल नहीं लेकिन मनोज बाजपेयी की फिट नहीं है बात. ब्रो एनिमल That's actually true. बड़ा I agree अच्छा with सिनेमा था. रणबीर कपूर ने क्या कैरेक्टर प्ले किया है, उसके डायरेक्टर ने क्या सीक्वेंसेस लिखे हैं. आई हैड अ फन टाइम वाचिंग एनिमल. ऑब्वियसली तूने इट पूरी इज अ नहीं प्रॉब्लमेटिक फिल्म बट आई वॉच्ड पल्प फिक्शन एंड आई डिडंट थिंक आई नीड टू गो एंड पॉइंट अ गन एट पीपल एंड बी लाइक इंग्लिश do you speak it and you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you. Douche. Obviously he's a gangster. It's a bad Yeah, like, do you think it's a film. movies लेकिन एक second, that is also true, but at the same time movies do inspire you. Yeah. For example, जब आप टाइटैनिक देखते हो आपके अंदर का आशिक थोड़ा सा तो दिल आपका धड़कता तो है. आप कहते हो यार मुझे भी इस टाइप Yeah, का प्यार चाहिए 100%. जिंदगी में. जब आप शाहरुख खान की कुछ होता है देखते हो तो आप कहते हो यार यानी लड़कियां कहती हैं कि यार इस तरह का लड़का चाहिए. ये बातें ट्रू भी तो है ना. 100%. So it's a dilemma in a way. No, what is the no, dilemma? no. बट आर्ट As का in, पर्पस ही यही है ना it's कि true and not true at the same time. No, Bro, but a film is a feeling. I understand what हाँ. you're saying. I understand. I've heard the whole conversation. हाँ. मैं agree भी कर रहा हूँ और मैं ये disagree भी तुम कर पूछ रहा रहे हो कि आर्ट का मकसद होता है कि एक फीलिंग इंस्पायर करना आपके अंदर और वो फीलिंग अच्छी होनी तुम चाहिए. बेसिकली कह रहे हो कि ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिल्म मेकर के ऊपर that what they're writing it can have somewhat of a negative effect on हूँ. नहीं मैं someone. ये नहीं कह रहा. मैं खाली सवाल छोड़ रहा वो हूँ कि ये डेविल्स एडवोकेट दोनों तरफ से किए. मैं तो exactly मैं खाली ये मैं इस चीज में मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का.
मैं खाली सवाल छोड़ रहा हूँ बाहर कि ये ट्रू भी है और ये ट्रू नहीं भी है, यानी इट्स अप फॉर डिबेट. It's if you're mentally ill or you have an issue whereby you are not fit to be part of society, whether you watch a movie or whatever, I don't think Or that the news. or the news Achha, for that matter, I Let's don't put think it this way. Let's put it this way. Visual arts that we consider, moving pictures we consider movies, right? yeah. And we are saying that it shouldn't change your morality based on the concepts that are presented in the film. No, Correct? it should. It should. Movies inspire morality changes in society, and movies form a society. Chalo, good that you said is- that, because the next point was then porn shouldn't have an effect on your mental. But it does. And it does. 100%. And it So, does. so that goes to show that what you see is has an effect on you. But there's a difference. Watching the film Animal once and taking that experience home and then watching another film is different from watching Animal every day and thinking that I want to be Ranbir Kapoor. Hmm. Or I think that audiences in 2024 are smart, like even if they're not, they should be smart enough to watch a film, experience it, and be like, yeah, it's fun and games, but that guy is toxic. Also, sex, something that hyper focuses on just one thing, that is sex. Obviously, the effect that's going to have on anyone's mental being is something that can't be put in comparison to a film that's made, and the effect that that film is going to have on someone's mental being, because that has emotional stages in it. The emotional stage in the world of porn is just, oh shit, here's a large pizza. I f***ed up your order. Oh, how do I pay you now? That's it. That's And the also, so obviously now there's we no know narrative, there's nothing. It's serving only one part of your brain that is like a sexual part of it that you're, And wo to, also, generally, bro, it is, I think, if we live in a society that focuses on very minor shit and makes it into a debate, rather than worrying about animal leaving an impact on the generation, worry about books that you teach kids that leave an impact. हम अपने syllabus के अंदर बड़ी अजीब चीजें पढ़ाते हैं बच्चों को, वो हटाओ, क्योंकि वो बच्चे सीरियस होकर पढ़ते कुछ हैं। गलत चीजें भी पढ़ाते हैं बहुत bro. गलत चीजें पढ़ाते My हैं, factual dad, incorrect चीजें my पढ़ाते हैं। जो वो होता नहीं था शायर शेर में ये फरमा रहे हैं, my school up until grade 6th I think was, हमें ना वो शायरी पढ़ा रहे थे, और उसका जो तर्जुमा था ना, मतलब जो तहरीर थी, जो भी तहरीर कहते हैं ना, जो भी कहते हैं, जो मायनी था उन शेरों, वो उन्होंने जो अपने आशिक ने महबूब के लिए लिखा हुआ था ना, the teachers were teaching us those शेर as in a completely different light, के वो उसमें रिलीजन आ गया था, उसमें पाकिस्तान इंडिया आ गया था, उसमें पता नहीं क्या क्या आ गया था, एंड everything that the शायर was actually not फरमाइंग. ठीक है, they just said this is what he's talking about. It's like I say कि Shakespeare was actually never talking about love. He was talking about, like, He was talking about the poverty and world industrial economics and like revolution industrial the impact revolution of and all of that imperial- stuff, bro. Like, तुम imperial लोग की Britain on the जिंदगी में world. कितने टीचर्स थे थ्रू आउट स्कूल एंड यूनी टाइप, ये गिने जो पड़ेंगे। नहीं जो तुम लोगों को एक्चुअली पसंद है, या जो दो, तुम लोगों दो, को अब ओ तुम एक- लोग सोच सकते ये हो देख, मैंने भी दो बोला। गुड एजुकेटर्स। दो 2 ऑल्सो मेरे में भी 3 या 4 होंगे। 2 एक तो मैं हूं ना। तुम लोग को मुझे जो मेरा फेवरेट टीचर था, his name was Sir Samuel. Zedality. I forgot what I was saying. बहुत जोर लगी और है। इसका स्कूल में बेस्ट फ्रेंड शाम। Best friend शाम इद्रीस। अच्छा, हाँ, तुम्हारे दोस्त your इतने teacher? बुरे क्यों लगते हैं? तुम्हारे दोस्त बुरे क्यों लगते हैं? वो किसने क्या बुरे ये लगते तुम्हारे हैं? दोस्त हैं? ये मुझे बुरे तो खाकान। इट्स अ जोक। Khakan Shahnawaz. जी सर। Doesn't He's like living up to his Zedali and reputation, Sham bro. Idris. ये टिडबिट बन रहा है हाँ. ताकि ये पोस्ट हो गैलेक्सी लॉलीवुड टाइप चैनल पे। He does not like YouTuber. Shavir class. Jafri gets uncomfortable when Khagan Shanwaz makes fun of Zedality. Makes Headline. Makes fun of Make fun of. Makes fun of Zedality. Zedality को वो ऊपर टैग हुआ और नीचे फिर Zedality नीचे जाके कमेंट Have you guys ever met? I've met I Zed. met him, nice guy. Seems like a nice guy. Yeah. Very good guy. Yeah. Anyways, I was talking about my teacher. That one thing that I awkward remember from my silence, bro. teacher. टीचर की बात बताएं।
जो मुझे एक चीज याद है आज तक, he explained the speed of light in the best way possible. वो थोड़े से ना वो थे, उस लिंगो को क्या कहते हैं जो उसकी भी है टाइगर श्रॉफ के बाप की, अरे बेड़ा इस तरह, हाँ बीड़ू बीड़ू, उनकी ना वो बीड़ू जुबान थी, और he was like वो वेस्ट इंडीज से आए थे। मौशिशी ये कौन है भाई? अच्छा नहीं, तुम्हें पर ये तेरे तुम्हारा वीडियो जो दिखाएंगे। टीचर था, जिस तरह उसने जिस उसका तरह नाम था समझाया जैद अली ना। टी, तो तुमने नहीं शाबिर जे यार, लिख लिया। उसका नाम था सर सैमुअल। सुन मेरी बात साले, अच्छा। फोकस कर। उन्होंने ओए कहा एक मिनट, बीकन हाउस वाले सर सैमुअल। हाँ, ओ तू तो मेरे साथ ही था bro, What a legend. bro, what a legend guy, I bro. swear. A great teacher. I never got the privilege to like being तुझे a student, तू but, कैसे कह सकता है but great bro, teacher? because उनके चर्चे मशहूर थे, bro. Bro, he was known to be a great teacher. The speed of अच्छा। light, the speed of light to me, he said, okay, आज तक मुझे ये बात है, कहता लाइट कितनी तेज है तुम जानता है, ये विंडो खोलेगा साला 1 सेकंड में लंदन पहुंच जाएगा। मैं वो बड़ी स्पीड है यार। बहुत स्पीड है भाई, नहीं ज्यादा। No, it's an art, bro. Like teaching in a way, na, that is like It's all about the way. कहता ये साला विंडो को लगे 1 सेकंड में लंदन लंदन पहुंच जाएगा। मैंने तुम लोगों He से said it in a सवाल way where you just can't forget shit like that. And But then, see, that's like important. concepts in your brain, they form. And you Yeah. don't even realize that they're forming in the back of your head. So having those a are good good teacher. educators. मैंने तुम And लोगों से that's why- सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि मुझे लगता है पर्सनली कि मेरी जिंदगी में जितने भी स्कूल्स, मैं बहुत ज्यादा स्कूल्स गया था क्योंकि मेरे अब्बू फौज में थे, तो जितने भी मैंने स्कूल्स में मैं गया हूँ और जितने बताए जितने ये मुझे पता था जितने टीचर से मैं पढ़ा हूँ उनमें से मुझे आज तक टोटल कुछ 4 लोग पसंद आए होंगे जो अच्छे टीचर्स भी थे, जिनका पढ़ाने का तरीका सही था, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते थे, या वो अच्छे तुम किस तरह इंसान- अंडरस्टैंड करते थे? ओए वैसे boy. तो एक मेरा इससे मुझे मेरा हाँ। पॉइंट ये था कि हाँ जी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इतना बुरा है और हमारे टीचर्स इतने बुरे हैं, अल्लाह माफ करे, कि आपकी कोई जनरेशन सही तरीके से आगे निकलती यार हम नहीं है। लोग और Gen यूनिवर्सिटी Z को इतना और मेरे discuss- सबसे बुरे टीचर्स मेरी यूनिवर्सिटी में थे। अभी की like I actually want a Gen Z representation. कल एक बॉय, परसों तरसों 3 दिन पहले एक बॉय आया था, दयान की चुस्सें। Do you guys know that guy? Little kid, 15 years of age. अबीद का भाई है ना? हाँ, अबीद का भाई है। हमारा यूनिवर्सिटी में मेरा बैचमेट था अबीद आतिफ, उसका छोटा भाई है ये। अच्छा, congratulations. नो नो, मैं कह रहा हूँ मैं उससे बड़ा पहले से जानता हूँ, साथ हम मिले हुए हैं उससे, वो इतना सा था यार। मैं क्या करूं ब्रो, मैं दयान की बात कर रहा हूं, हाँ, वो तो मैं podcast वही कह रहा हूँ कि कर रहा उससे वो बैठा हुआ है ना भाई। अच्छा अच्छा, खैर अच्छा मुबारक हो। पहले 3 दफा उससे कंफर्म किया, फिर मुझे कहता हाँ अबीद का भाई है। मैं कहा ओके। खैर एनीवेज, तो वो बैठा हुआ था, just speaking to him I could sense That you're old. Yes. क्या बात है? yes. हाँ। And I'm old. Like I think that I'm very well connected with The youth. the youth, because I'm like on social media all the time. I speak to them, blah blah blah. They comment, I can tell. Lekin bro, lingo change ho rahi hai. Like he was saying some things that I just didn't like. I didn't Bro, the understand. and I was generational like, gap has reduced now. It is no longer 10 years or 15 years. It is 3 years now, 4 Yeah. years even. Like a 23-year-old is very different. Like they talk different, they like things different, they think different. What word did he say? वो कौन सा लफ्ज था यार? वो इतना अजीब था कि वो याद भी नहीं रहा। He said something. अच्छा, मेरा एक अच्छा, सवाल अंकल। उठा था अभी जब हाँ। जरार बता रहा था, तुमने कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ये लिखा है अपनी बायो में कि यूर एन आर्मी ब्रैट? नहीं लिखा? ये नहीं। कौन होते हैं आर्मी ब्रैट? ये मैं मतलब हम सब आर्मी ब्रैट्स थे। अच्छा, growing आर्मी up. ब्रैट से बस वो कहते थे, इट्स जस्ट वाज अ टर्म गिवन टू Oh द wait, चिल्ड्रन ऑफ bro, I thought army brat is like actual army people. No, no, This is a बच्चे- term for like बच्चे बच्चे army आर्मी brat- वालों के। बच्चों को आर्मी ब्रैट I को इट अपने know आप वाज को about जस्ट अ that. टर्म। शुरू में ना मैंने नो नोटिस अगर अब होती किया, है। नहीं शुरू में पहले बहुत ज्यादा था, अब बच्चे नहीं लिखते। जाहिर जी गल है, वो जेन जी दा लिंगो चेंज हो गया ना नहीं, हुन। लिंगो नहीं change हुन हो कुछ गया। और ही कहते होंगे। लिंगो नहीं चेंज हो गया, उन बच्चे छपांदे ने हाँ। बच्चे कहते नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बता। हमें भी बिठाओ। सही बात। यार वैसे not related to this, but elections are coming. Not related to this. Not related to this. Elections are coming. Yeah. Elections are coming Everybody on should Feb vote, 8. यार. I don't know if I'm going to Vote upload करें. this before the elections or after the elections, because internet's यार अब बताओ क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? तुम लोग तो टीवी पे हो, तुम लोग तो बंद नहीं होते। कनाडा चला जा। हम लोग बंद हो जाते हैं ब्रो। कनाडा क्यों जाएं कनाडा ब्रो?
क्योंकि जैद वहाँ पे है. No. I think if I was just a content creator, I would move abroad. And if I had a Canadian passport, and if I had like a teacher there, and all. Apparently, internet there. The internet is being shut down on the 6th and will resume on the 9th or 10th. fully. I've heard. Economy को कितना आप- loss होगा इससे? काफी. Who cares? What are your thoughts on that? The fact VPN that चलेगा internet- यहाँ? No, bro. I think it's like, I mean, नहीं पहले ही डाउनलोड करना पैना. पहले ही डाउनलोड टॉरेंट जाके ना. फिल्में डाउनलोड कर But लो. yeah. हाँ. दे रहे हैं मिस आपको. मार्वल. Miss Marvel देखेंगे. इंशाल्लाह मार्वल्स आई हुई है. हाँ. फिल्म देखो. यार तुम लोग का वोट किधर है by the way? मेरा सियालकोट. तुम्हारा? Lord. तुम्हारा? मेरा चेंज हो गया मेरा भी चेंज जगह. हाँ. तेरा किधर है? कहीं गाजी रोड पे कोई स्कूल है. गुड ब्रो, मेरा चेंज हो गया, कराची चला गया. क्या? जी. तू जा रहा है वोट देने कराची? Yeah, of course. कैसे होता है कि आपका वोट चेंज हो गया लाहौर से कराची होकर? It's just I don't understand. यहाँ पे ये गाजी रोड वाला है ना जो छोटे से स्कूल में कोई जगह इन्होंने हाँ. बनाई और है. लाओ स्टेटस और ट्वीटा करो. ये तो नहीं वोट डालेगा. इसका वोट अगली दफा कनाडा होना. ट्रूडो को वोट दो जाके भाई. ये जो है ना, मजे का था. ये इसने वोट देने कैमो पैंट पहन के इसने कहा ना ये अब मैं इस तरह वोट दूंगा. Hashtag जा रहा Army है Brat. तू कराची? यार yes. I'm going Good. on the 7th inshallah. I'll be back on the 9th. बहुत आला. But I will vote. ये अब तो डिसाइड किया पता है कि किसको vote तो देना करना है? ही है. हाँ क्या है इनका ये निशान? क्या चकला symbol है? बेलना कौन सा आजाद उम्मीदवार यार है तुम्हारे बहुत उसमें? ज्यादा. मुर्गी. मैंने वो गधा गाड़ी, किसी को गधा गाड़ी दी गधा हुई है, गाड़ी. किसी को चप्पल दी हुई है, बैंगन. हाँ. मेरा बैंगन बेबी बन रहा था. कार्ट. बैंगन वाला है. हाँ मेरा फुल बैंगन बॉय था. मैंने भी देखना है कि मेरा मेरे इंतखाबी हल्के में निशान कौन- है. इंतखाबी निशान है बेबी कार्ट. वाकई. हाँ ब्रो, रैंडम इंतखाबी निशान बड़े मैंने देखे. I've seen human eyes. आंखें. आंखें. आंख. Oh, एक Illuminati. human eye. आंख. इल्यूमिनाटी को वोट. Illuminati. इंसानी आंख. नाम क्या लिखा है? इंसानी आंख. इंसानी हाँ, आंख. ये थप्पा लगाते थे भी. उन्होंने ट्रायंगल बना दी हो कि लोग इल्यूमिनाटी के डर से करें ही ना. तुम्हें क्या लगे यार, यहाँ पता होगा लोगों को शेर कि- ते लाओ मोरा. यार अभी रिसेंटली बड़ा फनी सीन हुआ. एफसी बार्सिलोना ने ना प्लेयर साइन किया. और उन्होंने वीटर रोक साइन किया ब्राजील से. उसका वहां पे निकनेम है एल टिग्रीनो. ठीक है कि उसे टाइगर कहते हैं. वो स्ट्राइकर है बड़ा फिट. उसने पहला गोल मारा. बारसा ने ट्वीट की शेर ना 10 टाइगर बना के मतलब ट्वीट कर दी कि टिग्रीनो ने स्कोर कर दिया पहला. ब्रो नून लीग शेयर करके लिख रही है पीएमएल is coming. मैंने कहा यार असल में हुआ है? हाँ ब्रो पीएमएलएन के बहुत ऑफिशियल वाला ट्विटर ने शेयर करके ना लिखा पीएमएलएन जिंदाबाद. और एफसी Good. PML मैं भी जिंदाबाद होता- लिखा है उन्होंने. मैं भी होता तो मैं मुझे करता लगा था उन्होंने शेर. क्या लिखा है. हाँ ब्रो बस एक था मुद्दा. जहाँ से मार्केटिंग मैं किससे वोट देनी किससे वोट दे रहे हो? अरे देखता हूँ, जाके देखूंगा ना हल्के पे कौन है क्या है. अच्छा देखते हैं. जाके देखोगे इलेक्शन वाले दिन जाके नहीं पार्टी का तो मुझे पता ही I है think जिसको voting, देना है. voting. Speaking We about all like, know who we're gonna हाँ. vote for, bro. the thing is, it's a very personal thing. I Unsaid. don't think we should discuss that. डर जो लगता है. नहीं कहते bro we know we're gonna vote for. Yeah. You know It's who I'm gonna vote unsaid. for? I think this is the first election we all like. मैं कसम उठा सकता हूँ. मुझे सबका पता है कौन किसको वोट कर रहा है यहाँ पे बैठे हुए. इस घर में. बता. और ऑल्सो आपको नहीं तू पता बता. कि आप वोट किसको कर रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन है. आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी. यही तो गेम है सारी यार. बट ब्रो वो पता भी है खेलेंगे यार, game game लेकिन क्या नहीं भी होता है, पता. खेलेंगे. What times we live in. समझ आ यार. भी रही है और नहीं भी समझ आ रही है. हाँ. बहुत आला बॉयज बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई है लेकिन बड़े मजे की बातें हुई हैं. एम्बैरेसिंग स्टोरीज तुम लोग कह रहे थे कि नहीं करेंगे लेकिन काफी तुम लोगों ने एम्बैरेसिंग अपनी अपनी स्टोरियां बता दी हैं. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एम्बैरेसिंग स्टोरीज गाइस. Thank you for listening to our lesser embarrassing Appreciate it. stories. Yeah, Thank next you for- podcast actually let's share the extreme ones. Extreme ones. कोई सीन ही नहीं है, bro. I can't talk my shit in front of people that I've done. Yeah. Oof, bro. Oof. वो ऐसी shit है कि मैं अपने आप को भी रिमाइंड नहीं कराना चाहता कि यार चुप कर जा, bro. Please. तेरा भी यही है. हाँ मैं एक ही मेरी आई थिंक जिंदगी में एम्बैरेसिंग स्टोरी है वो मैं नहीं बताना चाहता. वो आपका भी पब्लिक यही है. डोमेन में नहीं एग्जिस्ट करता. मेरी जो है ना मैंने इन कॉन्फिडेंस बताई सलमान को. अच्छा सलमान ने सारे बॉयज के सामने
ज़रार तूने वो इनको नहीं बताया था वो वाली स्टोरी यार सलमान का ये अच्छा, he pulled off a Daniel with you. हाँ, नहीं नहीं इसका दोस्त था सलमान, उसका ये मसला है, सबके सामने बोल बोल देता है यार बोल वो। देता चीजें बोल मेरा ये था मसला, फिर मैंने इसको इजी कर वो दिया. दोस्त जिनके पेट में इसका बात नहीं बहुत रहती। बड़ा वो मसला कहता है था। नहीं बॉयज है यार, बॉयज को तू बता सकता है वो वाली स्टोरी। इनको नहीं पहले बता के ना, इनको नहीं मैंने पता था. boys अच्छा, I को thought नहीं इनको पता था. Some people overplay that. Yo, Like I me. thought कि इनको पता था. I've done that a lot, bro. I can get information out of people just by saying like half the things that I know and they just give. हाँ, क्या सुना है तुम्हारे बारे में कुछ, हाँ। ये वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दोबारा। में जो होता है, और ये true है. हाँ, लोग बता भी देते हैं कि यार Yeah. तुझे किसने बताया ना कर. हाँ, बस हो जाता है बेटा ऐसे। लग गया बता. यार नहीं यार वो लड़की ऐसी थी. अब मैं जानना चाहता हूँ वो लड़की कैसी थी. हाँ। खैर anyways guys, बड़ा मजा आया actually आज की podcast में. Thank you so much for giving us your precious time. Khakan specially flew in from Karachi for this podcast, Mr. Khaku. Sir, Mr. Zarar skipped his shoot for this podcast. Mr. you Zarar. skipped your shoot? Yeah. Oh, the इसने अपना पूरा शूट आगे करा दिया Drama इस शो shoot. के लिए. और डैनी, thank you so much मैं for तो coming as well. वैसे ही वेला. Danny, thank you so much for driving from 2 lanes down. Yeah. Yeah. सही बात है. No guys, But but नहीं, thank you so इसका much. 2 lanes आना भी बहुत बड़ी बात है. I know ये कहीं नहीं नहीं आता. निकलता अपने He studio doesn't से. go. I know that. I Because know not that. so thick she but pain. वैसे भी कहता है कैसे मैं क्या तैयार हूँ दोबारा से. क्या पर्दा पुर्दा पहनना पड़ेगा दोबारा. यार ये तुम्हें अभी वो आपने नए पर्दे लिए थे, मैं वो बोरो कर सकता हूँ? नहीं, ये तू घर जाता है तो घर वालों को लगता नहीं चमगादड़ आ गई घर में. वो तो यही कहते रहते हैं. अच्छा। अभी भी मैं आने लगा था ना जब, अम्मी मुझे कहती खड़े होकर है, दिखा तो सही लोगों को, like let them नहीं understand what यार, you're wearing. I'd rather they remain curious. That's what she said. Interesting. और डैनी खड़े होके की दिखा उसमें लो. तो ये ज्यादा मेक सेंस कर रही है बात. But anyways, I think हम लोग दोबारा कहीं और निकलने वाले हैं इससे पहले कि हम कहीं और निकले. Thank you so much to all of you for coming. Thank you so much for all of you for listening. And we will as always catch you in the next one. Next episode is coming very soon. Subscribe if you haven't already. Love you all. Peace. Take care. Bye bye. Bye 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 bye.